Right. Start. So good afternoon, everyone, and welcome to the second day of Vedic mathematics, the magic of Vedic mathematics. Very first thing. So yesterday we learned some concepts of Vedic mathematics. The first formula, the first sutra, Ikadikena Purvena, and we learned how magical mathematics can be done. So what used to bore us, we used to struggle in that, and now with the help of simple sutras, simple definitions, we can move ahead in a faster, simple, and easier manner. So very first thing, welcome back, and a heartfelt gratitude to all of you for joining me again. This would be the second step. So pat yourself, applaud yourself. See, stepping ahead is always a great thing, because just taking the first step and then forgetting, it's just like taking a, so many people in our country, they take the subscription of gyms and they go for one day and they pay for full year. This happens because we never focus on taking small steps. So that is one reason why I introduce workshops in between the courses, teacher training programs, so that one can have a review of the subject. Right. So now coming to, before starting further, we had some homework. Yes, I think I received homework of Sonu. Yes, Other sir. Anjali, what about homework? Prachi abhi nahi aayi, Shilpa abhi nahi aayi. I have done homework in my note. मुझे WhatsApp कर देते अगर वहां पर नहीं भी सबमिट हो पा रहा. You could have WhatsApp me. Okay, any doubts you have? Yes, doctor. No doubt, sir. No doubt. No doubts. The doubt should always be there. It is a sign of progress. It is a sign of learning. Anyway, yes, doctor. Do you have any doubt? Dr. Kaur, No, thank you. Prachi, Prachi, are you listening to me? Am I audible to you? Yes, sir. होमवर्क कल का क्या हुआ? नहीं किया? नहीं, sir. बच्चों को ऐसे छोड़ देते हो जब ट्यूशन लेते हो? अगर एक दिन होमवर्क नहीं करेंगे तो अगले दिन कंसेप्ट कैसे याद रहेंगे? The homework is always an integral part of any journey, because you will learn only when you are doing the earlier day work. Chaliye, no issues. Try to do it. Try to complete it today. And if you would be serious in the journey, definitely you will do it for yourself. Right. Okay. So, what are the opportunities? Why we are going for Vedic mathematics? First, we need to understand this. Now, yesterday we learned why Vedic mathematics as an academic aspect. Like, why is it required? What is the need of the hour? Why should we do Vedic mathematics? So we discussed that Vedic mathematics academically, very first thing, enhances your speed, increases your speed 10 to 15 times faster, and we all experience that thing. The second was, it reduces the burden of tables. So we need not to understand, remember, cram tables above 8. Yes, anything? The third thing we learned was, it reduces scratch work as well as finger counting. Fourth, it enhances concentration. And the fifth was, it removes silly mistakes like multiple carryovers and borrows. Now, these are not only this much. We have several other advantages like ability to learn, confidence, right, accuracy in your answers. Now, this was all as a part of academics. But you all are joining here as a teacher training. So what are the financial benefits?
or what you find as an opportunity in this subject? All of you are already graduated or master graduation. If after this also we are seeking for some skill, see, first understand Vedic mathematics is a skill. So in very short time, just with this skill, you can start earning a good amount. Why? The reason we all know, in India, it has been made mandatory. Now, please understand one thing. When do we wear a helmet? When a police person is standing on the next traffic signal. Similarly, we use belt when he is standing. We are least bothered about other things, though we should be. Similarly, students go start preparing or they study when they have examinations near. See, we all look for the opportunity or we wait up till the last time. So now this is an opportunity and the last moment. Time will not repeat again. There would not be a fresh start ever again. Now it is a fresh start because universities, schools, they all need Vedic mathematics trainers. If you know, yesterday also one school from Bangalore, they approached me for offline classes, but since I cannot take in Bangalore, I had to shift to somebody else. Every day I receive such calls from different schools, universities, colleges. Today morning also I was preparing for a paper presentation in the international conference in Nepal. 32 international people, attendees are there. So why people are looking forward for this Vedic mathematics as a new opportunity due to national education policy? So many teachers, trainers, they are required. Correct. So what do you think as opportunities? Very first thing, you can start Vedic mathematics from anywhere because you don't need assets. You don't need a big asset. If you have a room in your home, you can start with Vedic mathematics classes right from there. No need of any big object, like no computers, nothing at all. No assets are required. Only few books. And rather, if you are going with me, you have the books already with you. Correct. So any time, anywhere, you can start with this classes. Second is, if you have funds, if you think, no, I have good sufficient funds, I don't want to start at my home, I want to make it a big institution where I can fetch more students. So I work as an entrepreneur. So that is also possible with this. Why? Because you have more options. You have option to teach the students. That is the first thing. Right from class third onwards to class 9. Then for competitive examinations of class 10th, 11th, 12th. Third, teachers training batch. Though you will not be able to initially take that, but with time, that is also possible. Right. And if you start with summer camps, this is the biggest opportunity. Today, every mother, she's looking for a summer camp for a child. And most of the inquiries are for class third, fourth. So these are good opportunities. This is the best time you can think. The moment we thought and we get the business. And today, whatever you learned yesterday, it is sufficient for 10 days for any student of class third, fourth, fifth. It is sufficient. Even if it is a class 9 student, even they need the basics to be done first. But yes, they'll move in a fast manner. So for them, it is only a 2 days or 3 days work. Today also we'll be learning on finding the squares, cubes. So that will also add up. So that means you have around 15 to 20 days content with you. So nobody can stop you. If you are a teacher or if you have a zeal to teach, it is very much possible. Correct. Third, if you say, no, I'm not putting at my home, I don't have a space over there, I don't want to engage there.
I don't have a training institution also. Still, you have an option. And this option has arisen after Corona. People want teachers to come back to their home. So you can start taking such classes at their home premises. So this is called as home tuitions. So this is also an opportunity. So you have got three different kind of opportunities. The only thing is your action, your first step towards that. Last week I didn't had. Before that I had one workshop, and there was a student from Timoga. I told him you can start, and immediately he designed a page and he opted 3 inquiries poured in on the same day. I won't say 3 into 3, 90 inquiries you'll get in a month, but yes, once you start, it will be there, right? So these were what you can do as a freelancer. But now certain people have a constraint. No, I want to work. I want to have a job. Yes, job opportunities are there. You can be in regular touch with us. I always receive number of inquiries from such schools who are looking for offline teacher or online teacher, but generally schools require offline teachers. So there is a good opportunity of Vedic mathematics trainers. And every city, yes, maybe you may have this in your mind. No, like Prachi was saying yesterday, no, my city is very small. Nobody is looking for that. People don't have the knowledge of. It's our perception. It is just how many people we are talking to. Just 5, 10, 20, 100, 200. Is the city having 200 people? No. So there is always, we need to come out of that barrier. People are looking forward. There are opportunities, there are options, but maybe we are not coming across that. So Vedic mathematics trainers are in large or huge demand today. The only thing, you have to scroll down the net. And if you're already using you're already running any institution, any tuition classes, like most of teachers are running. So this could be added as an additional component in your existing profession, right? So this would be only adding up and giving you benefits, because the best part is you don't need any asset to be installed. Like yesterday we discussed about abacus. So you need at least abacus instruments for that. Here that is also not required. So many things you have. Positive points are there, and that is the reason it can be easily started from anywhere. And yesterday also I was telling, it's not always that I'm sitting at my home and giving you the class. Maybe is different. So see how flexible you could be, right? Any questions you have? Yes, Anjali. Imani, again you joined late. What happened? Sir, we were having lunch. So yes, any questions do you have? So what about the homework now? Yes, Anjali has Prachi not done. Himani, did you check the homework? Yes, did you check with the homework? Two kids allow me to do anything. Okay. So apart from Vedic mathematics, there was one thing which I asked you, that was having a Facebook account. So how many of you have a Facebook account or a profile? Okay. And
Do you know what is the difference between a page and a profile? No. Page or profile में difference प्रोफाइल्स पेज पे हम लोग अपने कुछ भी मतलब अगर हमें कुछ अपना कुछ करना हो तो उससे रिलेटेड हम लोग कुछ भी डाल सकते हैं और प्रोफाइल तो हमारा एक कॉमन हो गया. Okay. See, now why Facebook I am talking about? I am not a promoter of Facebook, but because that is the easiest mode. Yes, sir. And Facebook profile means where you link with your friends. So you always get friends associated to your profile. And pages just like your official office, where you have map, where you have timings, where you have scheduling, where you have reviews. So everything that you have with your physical office, that is associated with a page. Now, certain times I have observed so many of you are posting and you are not getting response. You say, I often get this complaint from so many people that how do you get likes? We don't get it. So the point is you need to understand you are posting on your profiles. See, profile means only going to your friend circle. So if you are posting regarding your private things, for example, your celebration, your events or something, then they will like that. But if you're posting something related to your business, no one is interested in that. See, like, are you interested in my business or any of your friends' business? No. Similarly, they are not interested. And this is the biggest fault we do. This is the biggest thing biggest mistake we commit. People use, I'll show you. See, this is the difference now. Maybe you'll be. Now, if I show you a profile, for example, if we go for, I'll give you my example only. Facebook.com, this is common URL. After this, Dr. Yogesh Chandna. One. Now, this is my profile. And my page is where it is only Dr. Yogesh Chandna. Because URL is same. So you cannot have, URL can be unique only. You cannot have this. Either it is on the profile or it is on the page. The only difference would be in profile, you are linked with your friends. And here with your inquiries, your leads, your competitors, everything. Correct. Here you will get likes, followers. Nowadays, even Facebook have made this professional. So here also you see as a followers, but not more than 5,000 friends you can add. Plus, it is only for your personal use. If you use it for commercial, you will not get the leads, you will not get the inquiries, you will not get anything regarding your business. Third is what you call as a group. So Facebook.com, most of you don't even have this kind of URL. It is something number and ... because you have never made a unique URL. There is a link and you can do it yourself. That is possible, but so many of you don't know also. So this is groups, and again, Dr. Yogesh Chandna, so this, now see, this is matching, but no, in between there is a group. Group is a place where anyone can send their data or anyone can share the information. So this was one group where I said you can submit your homework and we can check. But again, the permissions are required in this. Correct. So this is basically
one thing you should know if you're going for online classes, because this will help you a lot, and properly using will always give you benefits. Often I have come across people who say, I don't have a Facebook, I don't use it. So my question to them is, why? Do you have sufficient number of funds to spend? I'll give you an example. In 1998 or 2000, nearby 2000, I used to spend 8 lakhs for advertisement for simply one city. One city I used to spend 8 lakh rupees because I was running a institution and newspaper advertisements used to cost more. So that comes out to be around 75,000 per month. Now I'm catering, if you leave world also, I'm catering so many countries, let it be India and Nepal only. And I have to spend only maximum 83 rupees a ad. So even if I'm spending 83, that comes out to be only 2,500 per month. And we say, महंगाई बढ़ गई hai. See, it is only you have to take wise decisions. When you say, I don't use a Facebook, you are losing an opportunity. You are losing businesses. You are losing more relations. And after Corona, people have earned only through online education, online teaching, not through offline. So I always recommend, yes, if you have certain restrictions at your home, this point could be there. Don't use your personal image, make it a Vedic maths image and put it. Correct. So there are always solutions if you discuss your problems. But this also is very much clear. We always use when it would be paid. And very soon, very shortly, Facebook is going to be paid. Nowadays, you are using these facilities free of cost, because within 2 years, the ad cost has been doubled. Before Corona, in 2020, when it was April 2020, when first Corona started, the first days, the ad was for 42 rupees per day minimum, and now it is minimum 83 point something. So it has almost doubled. So slowly and steadily, it will increase only. Right. So this was my perception. Any questions you have, you can ask. Sunday, all done. Chalo, let me motivate you. Let me give you some examples now. Just listen to him. ये तो पापा को बोला खाना दे देंगे जाओ. Now you might not be hearing sound properly, so that was low. He is Master Syed Hussain from Nigeria, South Africa. So he did, if you go through the date, it is 21 April 21. 20th April or 21. So he is a math teacher in a school in Nigeria. And now after doing this Vedic mathematics, he is been able to cater his knowledge to more students. I will not say that he is earning, his salary was doubled. No way. But what he gained was a positive relation with more students, because you are giving something extra to the students, and same respect with from the parents. So even if you are in a school and you cannot implement there, or it has not been implemented, but if you are giving some additional knowledge to your students, it will always benefit you. See, knowledge, sharing of knowledge will never go waste. Yesterday also somebody was saying,
it will be not useful. Their marks cut jayenge. See, we might have so many excuses. But tell me one thing, if someone gives you some knowledge and you get benefit out of that, will you not be grateful? Will you not be thankful to that person? It is always there. And this is a law of nature. If you share somewhat, nature is there to give you something back. And a very big example. See, I won't say I'm doing Vedic mathematics from past 20 years, 50 years, 60 years. No, not at all. But from the past 2 years, I'm the most viewed writer in the world. Do you know why? Because I have been sharing my knowledge. Just see, today also, if you go through, okay, I'll show you screen. If you go to Quora.com, Quora is a place where you get your answers to all your questions. And if you check, from past 2 years, I have been on the top. I've solved more than 180 questions over there. So that is what I was saying. Whenever you will be sharing knowledge with someone, maybe directly you won't get the funds at that moment, but you will be getting something. So sharing is always beneficial, right? And that has been, to me also, being the most viewed writer in the world on this topic, Vedic mathematics, though I started very late in comparison to other people. Similarly, she is a girl, a 10th class friend, now in 10th, now 11th, yes. That time she was in 10th when she started with Vedic mathematics, and she became the first trainer, youngest trainer working with me. She's from Assam. Now, what happened? She was training or teaching her juniors, her seniors, as well as fellow students. So what confidence she might have gained, just think over it. We had so many seminars together where I was delivering in English and she was translating in Assamese. So at this young stage, if one achieves that position, where will they go? Just think about it. Right? Yes, now you feel motivated or still Sunday vibes? अभी भी Sunday vibes चल रही हैं या कुछ लग रहा है पॉजिटिव? चलिए. See, if they can do, a person from South Africa who has no relation with Indian heritage, Indian culture, Indian text, if he can learn, and I'll give you just today's search about Vedic mathematics trainers in the world, you'll find more trainers outside India, not in India. Correct? Because they value knowledge, they accept knowledge. It is us, we are delaying to gain this knowledge. Knowledge is with us, but we are not extracting that. Correct? So my point is very much clear. If they can do, can you not do? Yes, why not you? You can do? Yes, Sonu? Prachi, Yes. Anjali. So let's Yes, start with mind exercises. So the first topic, take out your paper and pen. And yes. Now the first exercise assignment we'll be doing is finding the squares. What is a square? Yes, Prachi. What is a square? double. Double multiplication of Double. that number. Anjali? Yes, Double. double. Double, So yeah. actually, I don't know. I don't know. The Double. same number is multiplied twice. See, double means you multiply with 2. That is known as double. But
Square means when you multiply the same number 2 times. So it is written like if n is a number, it is raised to power 2. That means n into n. Yes. Correct. And whereas doubling means 2n. So there is always a difference. Correct. Yes, Dr. Kaur, is it clear? Yes. Yes, sir. Now, if n is 1 square. So what is this? 1 into 1 is? One. One. And if n is 2, so this becomes 2 into 2. Yes. 4. 4. If n is 9, it becomes 9 into 9, that is 81. 81. Now, first thing you have to do is, you please write down this table. Now, this table is going to be very important. So please write down. This is a table of squares of number, first 10 numbers. First 10 numbers. Now, this table is 1. So, square of 1 is 1. Yeah. Correct. Square of 2 is 2 into 2, 4. 4. Square of 3, 9. 9. 4, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100. Now, why this table is important? Because using this table, you can find square of any big number. Any big number. One thing. If time allows, I'll show you just by this table itself. You can find square roots. We often come across difficulties, or students of class 7th, 8th, 9th, they find very difficult to find square roots. Because in exam, we are under pressure and this is very difficult to find square roots. But with the help of this table and Vedic maths, you can just find square roots by mere observation. Observation means, and that sutra is called as Vilokanam Sutra. That means by mere observation, just by your naked eyes, you can see the number and give the answer. This is what it means. So we'll do that also today if time allows, but right now we'll start with scaring. So now if you have to find a scare of any number, for example 23, how do you find till now? Or 27 or 28? Yes, Prachi, कैसे निकालते हो? Himani? How will you find a scare of this number? 28 into 28. 28, yes. So you do like this, 28, 28. So 8 8 is 64, 4, 6 here, 16 plus 6, 22. 0, 6, 1 here, 2 2s are 4 and 1 5. So that becomes 7, 8, 4. Correct? Yes, sir. So that means you are doing twice multiplication and one time addition. Now this is, and we have come across that students are finding tough time in finding this way. Correct. Now see the easiest way. 28 square. Just now we found square of 2. What was that? 4. So 4. let's write in 2 digits, 0, 4. We will always remember whenever you are multiplying a single digit, answer should be in 2 digits. Why? Because on left hand side it will not matter, but on right hand side it will matter a lot.
What is square of 8? 64. 64. 64. So this is first step done. Half work is done. Second, we see three numbers here, 2, 2, 2. You can say this 2, as in a general case, it is like A, B here. Correct? In general representation. So we will find 2AB. So what is 2AB? 2 into 2, 4, 4 into 8, 32. 32. So I will not write anything below 4 and I will write 32 here and just add 7, 8, 4. So this was second step, finding 2AB. Yes, did you understand? Yes, sir. एक और करते हैं. Yes, Dr. Yes, Paul, sir. Himani. Himani, are you able to understand? Prachi, कहाँ गए? Yes. Yes, जी, sir. जब तक आप ऑन नहीं रखेंगे कुछ समझ नहीं आएगा, क्योंकि तब तक आप घर में आलू बनाते रहेंगे, पति को खाना देते रहेंगे, बच्चों को खिलाते रहेंगे, फिर मैथ्स नहीं होगा, फिर वही चलेगा. तो ऑन करेंगे वीडियो तो फिर भी समझ आ जाएगा, क्योंकि डर रहता है कि सर देख रहे हैं. Sir, please repeat the method, means this 2AB wala. ओके, कोई नंबर लो, लेट्स से 17. नाउ व्हाट इज स्क्वायर ऑफ 1, हिमानी? 1. 1, 1. लेट्स से व्हाट इज स्क्वायर ऑफ 7? 49. 49. 49. Now these are, this is A, this is B, this is 2. So what is 2 into 1 into 7? 14. 14. What is 2 into 1 into 7? 14. So I will not write anything here. I'll write here only. But first आपने ध्यान रखना है, यूनिट प्लेस पे कुछ नहीं लिखना. You have to avoid and add it. So it becomes 2, 8, 9. Now is it clear? Yes, sir. एक और कर लीजिए. 46 का find out for 46. Two 116. 3292. Yes, Anjali, your answer is? Eight answer. 1292. No, the 2316. Sir, 2116. 2116 किसका है? Sir, मेरा. मुझे नाम 2116. सोनू मोदी. अच्छा जी, और बोलिए अंजलि. 2116, sir. चलो, और हिमानी? Sir, I'm calculating. इतना लंबा नहीं है हिमानी. नो एक्सक्यूज. आपने, अच्छा हिमानी, कितने फोन नंबर्स याद है आज? सिर्फ अपना. सिर्फ अपना. 10 साल पहले जब मोबाइल नहीं था, लैंडलाइन फोन था, तब कितने याद हैं? याद थे? तब तो 30-40 थे. इसका मतलब क्या ये हम कहें कि हमारा दिमाग कमजोर हो गया? डिपेंडेंट हो गया सर. यस, गॉट द पॉइंट. हम लोग क्या सोचते हैं? एवरीथिंग इज स्टोर्ड इन माय मोबाइल, सो व्हाई शुड आई रिमेंबर एनीथिंग? नाउ द सेम केस, आप घबरा जाते हो मैथ्स में कि मुझे नहीं आता. पहली बात, ये नेगेटिव थॉट निकाल दो. जिस दिन नेगेटिव थॉट निकाल दोगे सब आएगा. इट्स वेरी इजी. नाउ सी व्हाट इज, किसी और ने भी गलत बताया था आंसर. 1292, sir. हाँ प्राची, क्या हुआ आपको? तो सी नाउ, पेन, अरे पेन का सिंबल. सो 4 का क्या बनेगा? 16. 16. 36 सॉरी 6 का क्या बनेगा?
36. So 16 and 36 आ गया. Yes, Okay. हिमानी इतना लिख पा रहे हैं? हाँ इतने तो कर लिया सर. ठीक है. नीचे अब सर मैंने उसको 2 से मल्टीप्लाई किया. किसको इसके लिए मेरा काम. 2 से मैं- किया? मैंने वो दोनों डिजिट जैसा 46 है तो 6 2 जार 12 ऐसा 6 जार उसका स्क्वायर नहीं निकाला. मेरा कंसिडरेशन हुआ कि 2 से मल्टीप्लाई करना है. मैंने आपको पहले ही बताया था ना. चलो कोई बात नहीं, वो शुरुआत है. कोई एक दो क्वेश्चन में गलती हो सकती है. ठीक है. 16 और 36 आ गया. उसके बाद 2 into 4 into 6. क्या आता है वो? यस हिमानी. 48. 48 ऐड कर दो. क्या आया? 2116. गॉट इट और नॉट? यस सर. यस 2 1 हिमानी, 1. आप क्लियर हुआ कि नहीं? 216 हाँ सर हो गया. हो कोई गया. बात नहीं, एक और करते हैं अभी. तो इट वाज 16, 36 और उसके बाद 6 into 4 is 24, 48. Finish. 6 1 1 2. क्लियर? एक और करिए. 38 निकालिए. 38 square. What is answer? Pass. 1444. 1444. 1444. 1444. यस हिमानी, सिर्फ आपका रह गया, सबका आंसर आ गया. सर इस बच्चे ने ना मेरी पेंसिल ले ली. अब ये आप देखिए मैम. लेके आते सर दूसरा पेन एक से. So 3 means 9, 64 and 8 3 is 24 plus 40. किया 4 4 14. Finish. Okay. 97 square. Fine. कि जब तक इसकी प्रैक्टिस नहीं होगी तब तक हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे. जल्दी. यस डॉक्टर कौर, आंसर आया आपका? यस सर. चलिए. 9409. 9409. परफेक्ट. ओके. 69 का क्या होगा? Yes. 69 स्क्वायर. फोर 761. 4761. 47. यस. 4761. ओके. हिमानी, सिर्फ आपका रह रहा है. कर रही हूँ सर. देन 81 का क्या होगा? ओके. फर्स्ट 21 का कर लीजिए. सर 81 का 6561. 6561. 6561 कैसे? 801 आएगा. और वो 1 का सर 01 लिखेंगे. 1 का 01. गॉट द पॉइंट. इसीलिए मैंने बोला था हर एक को 2 डिजिट्स में लिखें, बिकॉज आप अगर ये 8 का 64 और इसका 1 लिख देंगे, so then it would be only 16. so क्या आंसर आएगा? 801. is it possible 81 का 801? नो सर. No. So that is practically wrong. So that was the reason I said you should know how to add or multiply 2 single digit numbers. So whenever 2 अगर 1 इधर आता है तो हम यहाँ 01 लिखते हैं. So that can be ignored later on. So 81 में 64, 01 and then 16. So 6 5 6 1. Any doubt up till here? सर जो ये हम ऐड कर रहे हैं 16 या कुछ भी जो मतलब 2 into समथिंग करके, तो ये ऐसे जो 16 आपने लिखा है बीच में ही लिखना है ऑलवेज? पहली छोड़ के लिखना है बस. अब एक और एग्जांपल दे देता हूँ. ये देखो, जैसे 88 है. 88 का स्क्वायर है.
अब 8 का स्क्वायर आएगा 64, 8 का स्क्वायर आएगा 64, बट 64 इंटू 2 कितना होगा? 128। 128। तो आप यहां लिखोगे, अब ये बीच में तो आ ही नहीं सकता, बस आपने सिर्फ यूनिट प्लेस को छोड़ना है। 8144। तो इट्स नॉट कि बीच में आना है, इट इज लीविंग यूनिट प्लेस। ठीक है सर। क्या आएगा? 8144। किसी ने 88 बोला था तभी मैं। यस, क्लियर नाउ? यस सर। चलो एक और निकालिए। 35 स्क्वायर, 16 25 1625। 12 No, 25। 1225. कैसे आया 16? अभी आफ्टर दिस 5 मिनट्स के बाद यू विल बी एबल टू डू सच कैलकुलेशन विद इन 1 सेकेंड। वो भी बताऊंगा अभी, 1225 सर। एक मेथड बताऊंगा अभी। 93 स्क्वायर, 93 स्क्वायर, 8649. 8649। 8649। Okay. 8649। Yes, Himani, is it clear now or not? Anjali, Yes, sir. हो गया? 8649. चलो, good. So let's complete it. 99 square, and then we'll start with next. 99 square, 9801. 9801. 9801. 9801. Now, up till here, is it clear? Yes sir. Okay. 1 0. Let's see. I started like this. Concept is for 2-digit numbers, and we learned like if it is A B here, we started A square, B square, and we used to write 2AB here, leaving one space. Now this was one way, one approach, but यहाँ एक गलती हो जाती है जैसे 0 1 की हुई थी. We can also write this as A square, 2AB, and B square. This is balancing line. See, please understand. आप इसको देख के याद आ रहा होगा एक फॉर्मूला, A plus B whole Yes square sir. is equal to A square plus B square plus 2AB. Yes sir. But I'll give you the difference also. I'll explain you the difference. For example, if you have to find a square of 85, sorry, let's take smaller. 43 square. In mathematics, what we do, we make it 40 plus 3. And we say 1600 because 40 square is 1600 plus 3 square is 9 plus 240. 6 into 40, that is 240. So the answer becomes 1849. Correct. This is what you have been doing in your arithmetics.
Now see a very simple thing. Here what we did in Vedic maths today, I'm segregating. See, you took 40 as A. Here A is 4 and B was 3. And you did A square 16, 0, 9, and you wrote 4 3 is 12 and 2 24, and you added it 1 8 4 9. This was one approach. We can also do like this: A square 2AB B square. यहीं पर आ रहा है. But please understand here, there is disturbance. Here it is not A square B square plus 2AB. This has to be the format A square 2AB and B square. अब A square कितना हुआ 16, 2AB कितना हुआ 4 into 3 24, and B square 9. Either you write 9, either you write 0 9. That will not make any difference. This will go here 18. Even if it is 0 you have written, then also it would be 1849. If you have not, if by mistake you avoided 0, then also it is correct. Did you understand now? So this is the difference between, देखो यहाँ इतनी बड़ी बड़ी वैल्यूज आती हैं आपके नॉर्मल मैथ्स में, और यहाँ इस बैलेंसिंग लाइन से आप उसको छोटा कर लेते हो, एंड अल्टीमेटली 16 with 2 balancing line means 1600 only. बट अगर इतना बड़ा नंबर नहीं दिखेगा तो हम उतनी ईज से काम कर पाएंगे. अभी हमने देखिए ये किया था क्वेश्चन लाइक 35. सो फर्स्ट इज 3 square 2AB is 3 into 5 15, 30 and 25. So 2 goes here, 2 5 यहाँ आ गया, 3 square 9, 9 and 3 12. Finish. So all the questions, whatever we did, let's try again with this format. This is also another format you can use. Instead of vertical, horizontal. So what is 49 square? Find out. So it, Four zero one. 4. 2401. Okay. Because this is now 16. 9 into 4 is 36 to 72 and 81. So 1 here, if this 8 goes here, it becomes 80. That means 0. So 8 goes further, so it is 24. Clear? Both the ways you can do, or we were doing like this earlier. Sir, this method is more easy, I think. आपके ऊपर है, जो मर्जी ले सकते हैं मैम. मेरे पास 13 डिफरेंट मेथड्स हैं फाइंडिंग स्केयर्स के, जो बुक में लिखे हैं. आपके ऊपर है, आप कोई भी मेथड उठा सकते हैं उनमें से. Correct. One more. And yes, this is why this is easy, because even if you make some silly mistake, वो बच जाएगा आपका. 98 करिए.
अभी इससे भी इजी दो 9604 9604 दो कंसेप्ट और आने वाले हैं जो इनसे भी इजी होंगे. So it's not like this is end. This is just a start. Okay. So now I think 2-digit is clear. Yes, sir. Okay, let's go further. Though I told you this concept is only for 2 digits, but we can use it for 3 also. Let's say the question is 102. So we can have this A and we can have this B. So A square, 2AB, B square. So that means A square means 100. Yes or no? Yes, sir. 2AB means 2 into 2, 4 into 10, 40. And B square is 4. 0 04 or 4. 0, 4, So 4, 0, 0, 104. 104. So answer is 10404. See how easy. Otherwise, 3 time multiplication, 1 time addition. Is it clear to everyone? This much? Yes, sir. Any doubt if you have? सर ये एडिशन करते समय हमें ये 100 में 40 है तो 104 मतलब जैसे ये 4 ही लेना है वंस प्लेस. कल क्या सिखाया था? हर डिजिट, हर जगह पर एक ही डिजिट आना है. तो आपने जब 100 किया, 40 किया, 4 ये 0 था, तो इसको आप जब यहाँ लेके जाएंगे, यहाँ लेट्स से पहली बार में 04 रहा, यहाँ 40 का 40 रहा, क्योंकि 0 इधर गया तो 40 प्लस 0 इज 40 ओनली. लो मैं इसको 3 स्टेप्स में लिख देता हूँ. देन 10404. तो ये बैलेंसिंग लाइन तो जस्ट आपकी एक उसके लिए है कि आपका गलतियां हो. 10404 आ गया. अब एक क्वेश्चन और करते हैं. 121. तो A12 B1. So 12 square means 144. 12 into, क्योंकि अब 24 एंड 1 का 01 या 1. 14641. ठीक है, यहां तक क्लियर है? Yes. Any doubt? 14641. Now the question arises. जैसे मैंने आपको बोल दिया A इज इक्वल टू, बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीखने जा रहे हैं हम. आई सेड 102 में A इज इक्वल टू 10 एंड B इज इक्वल टू 2 एंड वी सॉल्व इट. एक शरारती बच्चा खड़ा होकर पूछता है वाई A इज इक्वल टू 10. मैं A को 1 कर दूं और B को 02 कर दूं, क्या ये पॉसिबल है? No. Why? In B, 0 is at the left more. तो उससे क्या हुआ? Sir, 2 का मल्टीपल 4 आएगा ना, यहाँ तो 10 का मल्टीपल 100 है. एक मिनट मैम, यहाँ चलो उसको छोड़ लेते हैं. यहाँ A इज इक्वल टू 1 और B इज इक्वल टू 21 कर सकते हैं. फिर हर सवाल कंसेप्ट तो हो सकते हैं. बोलिए. जी सर, कर सकते हैं मेरे ख्याल से. क्यों, क्या आएगा? और Yes, 02 दोबारा लो. 004.
बोलिए, क्या कर सकते हैं तो क्यों, नहीं कर सकते तो क्यों? सोचिए। देखिए ऐसे नहीं चलेगा कि आप, अगर आप कुछ भी नहीं पूछेंगे, कुछ भी सोचना ही नहीं चाहेंगे, तो फिर कैसे क्लास लेंगे कल को? बच्चे खड़े होके जहाज मारेंगे। दिस नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। सोचिए सोचिए। सर बी तो हमारी यूनिट है ना, यूनिट यूनिट प्लेस पे है बी तो। तो उससे क्या होता है? मैंने कल एक चीज बताई थी, ये मैथ्स नहीं है, ये वैदिक मैथ्स है, जहां आप कुछ भी सोच सकते हो, सोचने की आपको पूरी आजादी है, और आजादी इंप्लीमेंट भी होती है। हमने सोचा ही नहीं, सोचा तो हमने आज तक ये भी नहीं था कि 102 को अलग अलग कर दें। मींस मैंने आपको जैसे दिखाया, हम 100+2 करते हैं, a+b²। कहीं भी आपने देखा था 10+2 किया गया? आप कर लीजिए, वो गलत आएगा आंसर। अगर आप 10+2 को करते हैं तो इट विल बी ऑलवेज रॉन्ग, चेक इट। बट यहाँ Yes, sir. यहाँ ठीक आ रहा है, क्योंकि यहाँ आप प्लेस वैल्यूज के साथ कर रहे हैं, आप सेपरेट आइडेंटिटी दे रहे हैं। एंड प्लीज अंडरस्टैंड, सोच को बढ़ाएं, ये भी हो सकता है। सिर्फ क्या ध्यान रखना है, आज तक हमने यूनिट प्लेस को सिंगल डिजिट लिया, और अगर हमने यूनिट को सिंगल माना तो हमने हर जगह एक एक डिजिट ही डाला, इस जगह पे जितने मर्जी आए, बट पीछे हमने एक ही रखा। यहां हमने डबल किया है, तो दैट मींस आई विल हैव टू डिजिट्स हियर इट मे बी एनी, बिकॉज आई एम फिक्सिंग इट। अब देखिए इसको करने का तरीका, a² 1, 2ab, क्योंकि हमें आंसर 2 डिजिट्स में लिखना है, जैसे मैंने अभी समझाया था कि सो इट वुड बी 0,4, और b² अगेन 0,4, यही आपका आंसर है 10404। एक भी स्टेप और नहीं लेना पड़ा, मेंटली सॉल्व हो सकता था। जस्ट ये सोचना कि b की वैल्यू 2 डिजिट है, और अगर b के 2 है तो सारों में 2 आएगी। सिर्फ यहां चाहे 2 करना चाहो, आपको यहाँ 2 नहीं है तो यहां कर लो, यही क्वेश्चन। अब ये देखें, a1 b 21 into 2 42, but 21 square is 441। अब हमने तो सिर्फ डबल डिजिट लेना है, अगेन एक एक्स्ट्रा आ गया, ये 4 एक्स्ट्रा है, 4 इधर गया, सो 1 4 6 4 1, दिस इज योर आंसर। दैट्स व्हाट आई सेड, वैदिक मैथ्स विल गिव यू एबिलिटी टू थिंक। आज तक हम एक फॉर्मूला रटते थे, उसी के अकॉर्डिंग सवाल करते हैं, कुछ भी रटना नहीं है। अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। यूनिट प्लेस सिंगल डिजिट थी, हर जगह सिंगल सिंगल रहा। यूनिट प्लेस हमने खुद फोर्सिबली 2 डिजिट बना दिया, तो आई हैव टू मेक 2 डिजिट्स। और क्यों किया? क्योंकि कल को क्वेश्चन ये आता है, लेट्स से 712, लेट्स से दिस इज अ क्वेश्चन एंड यू हैव टू फाइंड अ स्केयर। अब आप पुराने स्टाइल में चलेंगे, a इज इक्वल टू 71, तो मुश्किल आ जाएगी आपको, क्योंकि 71 का तो स्केयर निकालना पड़ेगा पहले। और अगर आप ये मान के चले a इज इक्वल टू 7, b इज इक्वल टू 12, तो बहुत जल्दी हो जाएगा 49। और इधर b² 144, 7 into 12 is 84, करेक्ट। 84 into 2 is 168, खत्म। अब 2 डिजिट रखने हैं, तो ये इधर गया 44, 69 and 50, so this is your answer। समझ आया कि नहीं? कि एडिशन ही नहीं समझ में आ रही है। कोई बात नहीं, कल होमवर्क किया नहीं, अब मैं घर आके होमवर्क तो करूंगा नहीं आपका। कल का अगर होमवर्क कर नहीं। लेते तो आज आ जाता। बस ये
एक मिनट, ये 44 हमने एज इट इज लिखा, 1 8 में मिला दिया 9, 6 एज इट इज लिख लिया है, फिर 50। अच्छा, ये वापस से ऐसे ही एडिशन करते चलना है बस राइट हैंड से। मैम जैसे कल किया था सेम वही करना है, कल भी यही किया था, बट आज एक आप अगर ये डबल वाला नहीं करेंगे, ऐसे करेंगे तो ए की वैल्यू 71 है। ए स्क्वायर निकालने के लिए आपको दोबारा उसको एक स्टेप लेना पड़ेगा ना एक्स्ट्रा। बड़े नंबर्स में क्या करेंगे आप, छोटे नंबर्स तक ठीक था, खुश हो रहे थे, पर क्या बड़े नंबर्स नहीं आने चाहिए हमें, या मैं सिर्फ छोटे नंबर करा के खुश कर दूं आपको? सर जी सर जैसे 12 तो हमारा जैसे हमें पता होता है 12 इज 144, 12 की जगह 15 स्क्वायर आ गया तो आई डोंट नो व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 15, कैसे कैलकुलेट करूंगी? 225 715 होता है यहाँ पर अगर, हाँ, तो 7 का स्क्वायर, तो सर 15 का स्क्वायर निकालना इज टफ फॉर मी। फॉर यू सर 15 का स्क्वायर अभी 5 मिनट और दो। अब मैथ्स के ना टीचर, नो, कौन से सब्जेक्ट लेते हो? कंप्यूटर। 15 का तो स्क्वायर आप बोलोगे ही नहीं आज के बाद, 15 छोड़िए, 150 का 145 का भी आप 1 सेकंड में निकाल पाएंगे, 1 सेकंड। पर आपका क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। देखो अब अगर हमने इसको लिया था, मैं दोनों केस करके देता हूँ आपको, a इज 71, b इज 5, करेक्ट? तो इसका मतलब a स्क्वायर 2ab एंड b स्क्वायर, यहाँ पे तो आ गया 25, परफेक्ट। यस सर। यहाँ पे आ गया 2 into 5 is 10, तो 710। अब ये नहीं मुझे पता, करेक्ट, ये नहीं पता, तो मैं इसको फिर अलग से निकाल रहा हूँ, फिर अलग से निकाल सकते हैं ना। 7 स्क्वायर कितना हुआ? 49, 14 एंड 1, 1 इधर गया तो 5041, 5041। अब क्योंकि बी सिंगल डिजिट है, एक एक डिजिट ही रहेगा, 5 का 5 यहाँ रहा, 2 इधर गया, तो ये क्या बन गया? 712। सिर्फ 2 यहाँ आया, 71 आगे जाने का मतलब बना 2115 आ गया। डन। यस सर। पर मैं 51325 होगा, 112 सर। नहीं, आई थिंक 722, तो 72 जाएगा उधर। मैम चेक करो कहीं गलती हो रहा है। सर 72 जाएगा। हाँ यहाँ, हाँ ठीक जी। है। नहीं, कहीं तो गलती है, 72 कैसे जा रहा है? वाई भाई 710 था, क्यों कर रहे हैं? 511225 कैसे जाएगा अंजलि? नहीं सर, वो आपने नीचे 712 लिखा हुआ था ना, तो 72 कर दिया। 71 ही जाएगा ना भैया? 71 जाएगा। ठीक है, ओके, छोड़ो इसको। ये देखो मुश्किल लग रहा है, अगर हम इसको उल्टा ले लेते, a is equal to 7 and b is equal to 15 मानते, तो a स्क्वायर कितना आया? 49। 15 into 2 कितना हुआ? 30 into 7 210, 15 स्क्वायर इज 225। अच्छा, अब क्योंकि डबल डिजिट है, दो डिजिट आ सकते हैं, तो सिर्फ सीधा 25 यहाँ आ गया, सिर्फ 2 आगे गया, 2 जाएगा, 212 मतलब 12 सिर्फ 2 आगे गया तो वो 51। अब देखो आंसर, तो कौन सा इजी है? सी इट ऑल डिपेंड्स, यही तो आपकी एबिलिटी है और यही वैदिक मैथ्स का बेनिफिट है। इट्स नॉट कि धर्रे पे चलना है, ए को इतना ही रखना है,
नो। यस प्राची, अब समझ आया कि नहीं? यस सर। नहीं आया? सर ये हम पर ही डिपेंड करता है कि हम कोई भी ए या बी चूज कर सकते हैं। यस। तो यही तो ये फ्लेक्सिबिलिटी हमें वहां मैथ्स में तो मिलती नहीं। नहीं, वहां तो फैक्टर्स करने होते हैं। यही तो प्रॉब्लम है। गॉट माय पॉइंट? वहां पे क्या कर सकते थे आप? 700 प्लस 15 स्क्वायर, दिस वाज द अप्रोच। तो 700 का मतलब हो जाता 49। इतना बड़ा नंबर देख के बच्चा डर जाता है। प्लस 15 स्क्वायर इज 225 एंड अगेन 15 into 7 into 2, so वो 15 2 is 30, 321, 210 और 2 0। अब करते रहो इसको ऐड। बैलेंसिंग लाइन का यही तो बेनिफिट है। देखो देखो 49 में कितने जीरोस हैं? कोई, क्योंकि 4। दो वहां 21 में 3 है, तो वो 210 दिया हुआ है, उसमें 2। तो वैदिक मैथ से इजीनेस आती है, सिंप्लिसिटी आती है। एक और करते हैं ये मैं, और ये सब क्वेश्चंस आप 1 सेकंड में भी कर सकते हो। जो अभी इतना लंबा कर रहे हैं वो भी तरीका बताऊंगा, बट पहले थोड़ा टफ कर लो। चलो देखते हैं ये कौन कौन निकाल सकता है। 9 9 9, ये बता देता हूं। 9 into 99 into 2 is 1782। चलिए इतनी हिंट भी दे दिया, अब निकालें। प्राची ट्राई करो। दोनों, अब चाहे ए को 9 ले लो, चाहे बी को 99 ले लो, दोनों केसेस में सेम ही घूमना है। यस सर। बी स्क्वायर क्या होगा सर? 99 into 99। 9801 9801। इस वाले में सर एडिशन कैसे करेंगे? एडिशन बहुत मैथ्स तो इसी को कहते हैं, तभी तो बच्चे फेल हो जाते हैं। हाँ, इसको मैं सर आप इसी क्वेश्चन को 1 सेकंड में कर पाएंगे। सर 988001 9 888001। थोड़ी सी गलती है, 998001 आना। बैलेंसिंग चेक करो। कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन you'll be able to do within 1 second. I'll again repeat, 1 second. जैसे कल बताया था 10 seconds, तो ये भी 1 second में होगा। I'll give you another technique for that. थोड़ा सा टफ भी देखना चाहिए ना सब कुछ। यस सर। 998001। करेक्ट। हो गया यस डॉक्टर कौर। हो गया सर। 99 and 8001। कोई बात नहीं। अब देखो, तो दैट वाज द फर्स्ट मेथड फॉर 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट तो क्लियर हो गए, उसमें तो कोई परेशानी नहीं है। No. हम और भी देखते हैं, एक और कंसेप्ट करते हैं। फाइंडिंग, अभी आपने बोला 15 का स्क्वायर तो मुझे आएगा। फाइंडिंग स्क्वायर्स ऑफ नंबर्स एंडिंग विद 5।
So ending with 5 कौन से हैं? 15, 25, 35, 45, like this. आप हर आंसर मैक्सिमम आपको 2 सेकंड लगने चाहिए, पेपर की भी जरूरत नहीं है। अभी हमने कहा 15 स्क्वायर, तो हमने किया 01, 25 और 10 नीचे किया, 225 वाज आवर आंसर। बट इसमें थोड़ा सा तो टाइम लगा। अब इसको समझो, जब भी नंबर 5 से एंड हो रहा है, व्हेनेवर इट इज एंडिंग विद 5, पहली बात, आंसर के 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट 5 का हमेशा 25 ही आएगा, कुछ भी हो जाए। करेक्ट हिमानी? दिस यू कैन डू, बहुत सिंपल, इससे ज्यादा सिंपल कुछ भी नहीं हो सकता मैथ्स में। दिस वन, व्हाटएवर इज दिस नंबर बिफोर 5, यहां पे हमने इकादिकेना पूर्वेना लगाना है, जैसे कल लगाया था। बट कल हमने ऐड किया था, आज हमें मल्टीप्लाई करना है। सो व्हाटएवर इज दिस नंबर, मल्टीप्लाई विद 1 मोर। 1 से ज्यादा क्या होता है? 2. So what is 1 into 2? 2. तो आंसर इज 225। इसको फास्ट कैसे करोगे? 25, what is 2 into next number? 625. 3. 25. 2 into 3 is 625. 625. What comes after 3? 1225. 1225. Yes, Anjali, now it is clear or not? Yes, sir. अच्छा, चलिए अब देखते हैं कौन जल्दी बताता है। यस हिमानी, यस सर। ये क्लियर हुआ है? हाँ सर, लास्ट वाले को 25 कर दो और जो उसके पहले वाला डिजिट है उसको एक नंबर डाल दो। ओके, सो व्हाट इज 45 स्क्वायर? 5 plus 20, 25. परफेक्ट। व्हाट इज 55 स्क्वायर? 25, 25. 25. 30, 25. Sorry, 30, 25. 30, 25. 30, 25. So 65 square? 42, 25. 42, 25. 25. 75 square? 56, 65. 25. 56, 55. 25. 85 square? 72, 25. 25. 95 square? 90, 81, 25. 25. 105 square? 1110, 25. 110, 1110 नहीं, वो ज्यादा बढ़ जाएगा। Sorry, 110. 110. 110, 25. 115 square? कल किया था 11 into 12? 121, 25. अच्छा, 11 into 11 कर रहे हो? 11 multiply by 12. क्या है? 240, 225. 13225, 11 into 12 कल का किया नहीं ना होमवर्क? ये देखो फर्स्ट क्वेश्चन ही था, फर्स्ट डिजिट as it is, then adding the digits and this. So this was the reason first day was important. Okay, 125 square क्या होगा? What is 12 into 13? 156. 12 into 13, 12 का 120 और 36, 156. 15625. चलिए 2 और कर लेते हैं जल्दी। 135 स्क्वायर क्या होगा? और 145 स्क्वायर। So this is 13 into 14. 13 into 14 is 18225. What is 14 into 15? 210, 25. 20. अब अंजलि आप बोलोगे कैसे कर लेते हो? 14 into 15, अरे भाई 14 into 10 कितना है? 140, और 14 into 5 कितना है? 70, so 210. Yes, sir. हो गया 5 सेकंड में। मैक्सिमम सबको 5 सेकंड से ऊपर तो नहीं लगे, 2 सेकंड ही लगे हैं। नाउ ऐसा क्यों हुआ? Why? कि हमने अभी एक फॉर्मूला किया था, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू a square 2ab b square. This all these have been proved in Vedic maths.
अब if yes Dr. Kaur, no answer from you. Yes, sir. हो गया सब, इसमें तो कोई डाउट नहीं है. हिमानी, हो गया सर, हो गया. मीन्स थोड़ा प्रैक्टिस से आएगा. और इसको भी प्रैक्टिस करनी है. डोंट से नहीं दिस मैम. नहीं नहीं, छोटे वाला नहीं सर, बड़े वाला. बड़े वाला तो अब हम याद तो करना ही पड़ेगा ना. ए, सो इफ बी इज 5, तो इसका क्या हो जाएगा? ए 5 स्क्वायर, इसका मतलब ए स्क्वायर 10 ए एंड 25. करेक्ट. सो Yes. अगर हम ए को आगे भेज देते हैं तो दैट बिकम्स ए स्क्वायर प्लस ए. यहाँ क्योंकि वो जीरो नहीं है, इट इज बेसिकली टेंस पोजीशन, सो इट विल बी लाइक दिस 2 5. ये यहाँ इसको मिसगाइड मत समझना कि इट इज 10, इट इज टेंस पोजीशन. सो 2 जब आता है तो इट विल बी एडेड, ए प्लस 2 हो जाएगा. तो ए स्क्वायर प्लस ए क्या है? ए इंटू ए प्लस 1. और इन दोनों को आप एक साथ भी लिख सकते हो क्योंकि दोनों 1 1 डिजिट्स हैं एक एक पोजीशन पे. तो दिस इज द कंसेप्ट एकाधिकेना कंसेप्ट की यू आर मल्टीप्लाइंग द नंबर विद इट्स सक्सेसर और एड 1. तो कल जो एकाधिकेना कंसेप्ट हमने किया था दैट वाज यूज्ड एट अ टेबल, और आज जो हमने किया है हाउ टू फाइंड इट स्क्वायर्स ऑफ नंबर्स एंडिंग विद 5. ऐसे ही एक और जगह भी ये कंसेप्ट लगता है. इट्स नॉट ओनली वन, मल्टीप्लिकेशन में भी लगता है. व्हेन नंबर्स आर एडिंग अप टू मेक 10, उस पर सूत्रा का नाम दूसरा हो जाता है. सूत्रा इज कॉल्ड एज अंत्यय दशके. और बड़ी प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कर पाते हैं उससे. इज इट क्लियर नाउ? अब थर्ड मेथड, ये स्केयरिंग ही चल रहा है अभी तक. I'll give you one more technique. अभी हमने 999 स्क्वायर में कितने मिनट लगाए? You all took around 5 minutes. वो भी मैंने बता दिया था. I gave all the answers. आधों ने किया ही नहीं, छोड़ दिया. Now I'll give you a concept of, see, what is a square, a plus b square. It is, you can say, चलो मैं पहले आपको वो उससे करवाता हूँ, समझा देता हूँ, फिर आपको फॉर्मूला ले आऊंगा. सपोज हमने एक क्वेश्चन करना है 23 स्क्वायर. करेक्ट. नाउ वी डिड वन अप्रोच, 2 स्क्वायर 4, दूसरा 2 3 6 12 एंड 9. सो आंसर आ गया 529. करेक्ट. दिस इज हाउ वी डिड. One more approach is there. Maybe it is not helpful in such small numbers, but जब 999 की बात आएगी तो you'll see it is very useful in such numbers. My aim is कि I should have 0 at this position. 3 की जगह 0 आ जाए. So what? How I will get? How can I get? Tell me. 20 plus 3. Okay, good. Or yes, Sonu. Or 20 plus 3. 20 20 plus 3. चलो अभी तो 23 पहले ही है उसमें. तो इसका मतलब if I subtract 3 I'll get 20. Now whatever I subtracted I have to add also.
बिकॉज क्यों किया सब्ट्रैक्ट? तो आई हैव टू ऐड 23 प्लस 3 इज 26. यहां तक क्लियर? हाँ अब अगर आप इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दो, बहुत इजी हो गया, बिकॉज हियर इट इज अ सिंगल डिजिट नंबर नाउ. 26 into 2 is 52 and 0 520. यस प्लस इसका स्क्वायर निकाल लो या इसका स्क्वायर निकाल लो, किसी एक का 9 529. यस बट ये नहीं है कि ये भी एक ही कर, आप सबने, क्योंकि एक ने 3 बोला तो सभी ने बोल दिया. नाउ सी अनदर केस, यू कैन ऐड 7, यस तो वो बन जाएगा 30. Now it has been, you have added 7, so you have to subtract 7, means you have to balance. If you are subtracting upper side, you have to add. If you are adding upper side, you have to subtract. So what is 23 minus 7? 16. So what is 16 into 3? 480. And what is 7 square? 49. Again it is 529. देखो कितनी अप्रोच हो गई, क्योंकि हर बच्चे का सोचने का तरीका अलग होगा. अगर one person thinks कि adding 3, subtracting 3 makes 20, other person कैसे? No sir, add 7, make it 30. मैंने आपसे इतना ही तो पूछा था, how can I get 0 at unit place? Why didn't you think this way कि add 7, make it 30? Yes Anjali, is it clear? Yes sir. अंडरस्टैंड. अभी सबने देखो कितना मिनट लगाया था वो 999 में. अभी देखिए कितने सेकंड लगेंगे आपको. 999. Now if I add 1 to 999, it becomes 1000. Correct? यस यस If I subtract, it will become 998. इन दोनों को मल्टीप्लाई करने में कोई टाइम लगेगा? 998 000 and add 1, क्योंकि 1 square is 1. 998 001. No calculation you have done. Otherwise आपने उस मेथड में 9 स्क्वायर निकाला पहले, अगर याद नहीं था 81. 99 स्क्वायर निकाला जो आपको नहीं याद था, तो 9801. उसके बाद 9 into 99 into 2 निकाला, जो नहीं निकला तो 1782. कितनी कैलकुलेशंस की आपने, और यहाँ पे सिर्फ ऐड 1 किया एंड यू गॉट द आंसर. इज इट क्लियर नाउ? यस सर. This is how you have to work on it. See, basically what we are doing here is simple सा लॉजिक है. ए स्क्वायर निकालना है हमने. कर क्या रहे हैं हम? ए प्लस बी, ए माइनस बी प्लस बी स्क्वायर. तो वो क्या हो जाता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. यहाँ हो जाता है माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. वो था वो कैंसिल हो जाता है. यू गेट द ए स्क्वायर. दिस इज व्हाट यू आर डूइंग. नाउ इज इट क्लियर? यस सर. चलो, अगर ये क्लियर है तो देखो इससे और इजी बनाते हैं हम. इवन एनी बिग नंबर यू कैन डू इट. So take 97 square. Try to do this way. नाइन 9609. 9409. So कहाँ गलती हो गया दोनों? अंजलि 9409. 96 ने कहा. सर मैंने. क्या हो गया? ये लो 97 प्लस 3 Plus 300. 100. माइनस 3 हाँ सर. 94. सर तो वो 96 तो आने का सवाल ही नहीं होता. हाँ सर वो गलती हो गई थोड़ी. सर मुझे लास्ट कैलकुलेशन में थोड़ा सा कंफ्यूजन है. कौन से वाले में? ये तो मैंने सही किया 100 और 94, बट जो लास्ट स्टेप है ये वाली थोड़ी सी कंफ्यूजन. कौन सा मुझे बताओ, मतलब कहाँ लास्ट स्टेप किसे कह रहे हैं आप?
जैसे +3 किया 100 ऊपर, -3 किया नीचे 94, देन नेक्स्ट स्टेप ये वाली स्टेप में जो आपने 9400 लिखा है वहां एग्जैक्टली क्या करना है? ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ये जो दो आउटपुट आए हैं ना, हाँ, इनको 94 और 100 को मल्टीप्लाई करना है। तभी तो इजी कर रहे हैं हम। जीरो क्यों कर रहे थे यहाँ, हमने क्यों जीरो किया? 94 100, हाँ अब ये देखो, एक क्वेश्चन देता हूँ। हाँ, आगे और 3 का स्क्वायर नीचे ऐड करना है। हाँ, 1 अब ये देखो 113 है, अगर मैं इसको चाहूं तो मैं कहूंगा -13, 100 आ गया, और नीचे 126 आ गया। अब 126 को 100 से करना तो कोई बड़ी बात नहीं, 126 2 0 13 स्क्वायर, जिसको नहीं आता वरना 169 होता है, तो 12769 आ गया। तो कुछ लोग कहेंगे नहीं सर, 113 को 3 माइनस कर दो, 110 कर दो यहाँ। अरे भाई, 110 से मल्टीप्लाई करना कौन सा आसान रह जाएगा? तो मेक इट एज इजी एज यू कैन। मतलब हमें 100 करना है, जैसा बैलेंस नियर अबाउट की मतलब 100 करना नहीं है, मतलब है कि सिंगल डिजिट की पोजीशन ले आओगे तो बेटर है। अब 100, अगर ये जैसे क्वेश्चन ही 217 210, ये देखिए 100 नहीं समझना आपने, रट्टा नहीं मारना, फिर वही बात रखते की। सपोज मैं आपको क्वेश्चन देता हूं 212 स्क्वायर, अब क्या करेंगे? अब -12 +12 और -12, ठीक है, सो कितना आया? 224। अब 2 से मल्टीप्लाई करना तो आसान है ना, 4 4 8 और 2 0, और 12 का स्क्वायर होता है 144। देखिए, समझने की 4594 हो गया, समझ आया? अब यस सर। ये हमें देखना है कि क्या मेथड इजी रहेगा। अगर 2 डिजिट का है तो पहले वाले से कर लो, 5 का है तो मन में कर लो, और कोई कंफ्यूजन बड़ा नंबर है तो ऐसे कर लो। इवन कंसेप्ट है, कोई नंबर 4 से है एंड हो रहा है या 6 से एंड हो रहा है, वो भी मेंटली हो सकता है। सो हर चीज का कंसेप्ट है इसमें। अभी क्लियर हुआ कि नहीं? यस प्राची, अंजलि, सोनू, एनी यस सर। क्वेश्चन? डॉक्टर, एनी क्वेश्चन? यस सर। हिमानी, बंद ही कर। नो सर। सो दीज वर द 3। चलो एक और कर लो ऐसा ही। अगर बहुत बड़ा क्वेश्चन भी है 4985 क्या करेंगे? 15 स्क्वायर पता है हमें, यस सर 2 to 5। चलो निकालो। सर इसको ऐसे ही मेथड से करना है क्या जो अभी किया? पहले मेथड से तो आप कर ही नहीं पाएंगे ना, क्योंकि पहले मेथड में आपको ए भी 49 लेना पड़ेगा, बी भी 85 लेना पड़ेगा। देखो दोनों करने को तो कर सकते हो आप, इसको ए ले लो, इसको बी ले लो। हाँ, जैसा क्या? 5 है एंड में, तो 25 करके नहीं कर पाएंगे। 25 85 प्लस 25 तो 110 होता है। नहीं, लास्ट में 5 है ना इस नंबर के। तो वो अगर वो मेथड करते हो तो फिर 498 इंटू 499 कर पाओगे? अभी नहीं कर सकते वो आप। देखो यही धीरे धीरे स्टेप्स जब सीखोगे वो भी हो जाएगा कि 489 इंटू 4 कितने। अब ये मैं छोटा सा बताता हूँ, इसको 3 तरीके से कर सकते हो अभी आप। एक ए ले लो, इसको बी ले लो, सॉल्व कर लेंगे। दूसरा जो आप बता रहे हैं ये वाला, ये भी हो जाएगा। बट अभी सबसे इजी तो आपका ये है ना कि +15 किया,
5000 -15 किया 4970। अब 5 से मल्टीप्लाई करना सबसे आसान होता है, अगर वो आ जाए तो कोई दिक्कत ही नहीं। यस सर। यस सर। अब जब धीरे धीरे सीखेंगे तो ये भी पता चलेगा, जहां भी मल्टीप्लिकेशन करनी है 5 से, हम 5 से मल्टीप्लाई नहीं करते, हम डिवाइड से 2 कर देते हैं, क्योंकि वो ज्यादा इजी है। जहां भी 50 से डिवाइड करना है वहां मल्टीप्लाई करेंगे, जहां मल्टीप्लाई करना है वहां डिवाइड करेंगे। इसे कहते हैं डबलिंग या हाफिंग। क्या आंसर आया? 24850225। ये देखो 24850 तो आ गया इसका, और 5 का 3 0 अभी भी हैं, वो तो नहीं है ना। 25075 85 24850225। ये 225 हो जाएगा बस। हाँ। Anything can be done. For The thing is you need to have that confidence. Clear? कोई डाउट अब इन तीनों मेथड में? कोई क्वेश्चन ताकि आगे चले? एनी क्वेश्चन यू हैव? यस अंजलि, अब 15 25 35 45 कोई दर? No, sir. The only thing मैं कल भी बोला था, there is nothing difficult. सर बट 2 डिजिट के बाद 3 डिजिट के लिए मतलब 3 से ऑनवर्ड्स यही मेथड ज्यादा इजीली हम कर सकते हैं। 2 डिजिट के लिए तो भी ए और वो ए स्क्वायर। प्राची सुन लो, 10 मेथड और भी हैं। अगर ट्रेनर बनना है या टीचर बनना है, ये आपको डिसाइड करना है। सिर्फ एक क्लास तक लिमिट रखना है या आगे बढ़ना है, नहीं तो 2 डिजिट वाले से ही लगे रहो, सारे हो जाएंगे सॉल्व। अब मैं आपको हिंट दूं, ये लो, सपोज एक 25 से एंड का भी होता है। चलो मैं एक करके दिखाता हूं। 225 स्क्वायर अगर करना है, दो तरीके हैं, एक 22 इंटू 23 और इधर आ गया 25, करेक्ट? ये तरीका आपको पता ही है अभी तक। सो 22 इंटू 23 क्या होगा? निकालो, 506। आपको भी फास्ट मल्टीप्लिकेशन नहीं आती, वो भी आ जाएगी धीरे धीरे। ये एक स्टेप और भी है इजी, क्योंकि ये करने में भी तो टाइम लगता है। 11 to 2. जहां भी 25 एंड हो वहां आंसर आएगा 625। अब आंसर यहां क्या आएगा? इसके 3 स्टेप्स हैं। पहला, ये जो नंबर है इसको स्क्वायर कर दो, वो आ गया 4। दूसरा, इसको हाफ कर दो, वो आ गया 1। तीसरा, इसको ऐड कर दो इन दोनों को, वो आ गया 5। चौथा, उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, वो आ गया 50। यहाँ 50 रख दो, फिनिश। तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो आप, क्योंकि बड़े नंबर्स में आप कैलकुलेशन नहीं कर सकते। सपोज ये यही 1225 होता, सो 122 इंटू 3 नहीं किया जा सकता, बल्कि 12 को इजीली कर सकते थे आप। तो यू आर नॉट गोइंग टू टीच ओनली क्लास थर्ड। क्लास थर्ड में 2 डिजिट आएंगे, 9th वाले 4 डिजिट 5 डिजिट भी मांगेंगे। देन यू हैव टू इंक्रीज योर नॉलेज। चलो, so coming back, if you have any question you can ask, otherwise this was, ये था देखो स्केयरिंग का, leave unit place and write the product from 10th position. Got it? So 23 किया था, 59 नहीं किया, मतलब this was the numbers, and then square with 2 digit number, then Kadikena Purvena wala 15, so a into a plus 1, correct? 115 हमने किया। यूनिवर्सल मेथड,
थर्ड जो मेथड किया था, अब तो 97 एग्जांपल लिया था, 52 नहीं लिया, बट यू कैन डू इट वेरी इजीली. 2 1 3 1 1 2. Now, so before moving to cubes, there is a topic. There is, because this workshop was to launch your classes also, right? So we'll be starting with launching of classes. So how many of you are looking forward to launch classes, या सिर्फ हम थोड़ा सा knowledge लेना चाहते हैं? How many of you are looking forward कि classes मुझे launch करनी है? सर मी कोई मुश्किल नहीं है, आप कल से ही कर सकते हैं. It is so easy. It is so easy. But बस confidence रखना, बाकी कुछ नहीं चाहिए. See, I'll tell you, Vedic maths is the most easiest thing you can do. इससे आसान कुछ भी नहीं है. कारण कुछ बाहर तो करना नहीं है आपने, जो मैथ्स उनका है उसको इजी कर रहे हो. So they will be always thankful to you. और इंटरेस्ट आपका इसलिए आएगा क्योंकि मजा तो आता है. ये तो आज आप जैसे 5 वाला किया, were we aware about that concept earlier? या 999 का देखिए, in one method we took 3 minutes, 4 minutes, and in one method we took hardly seconds. So that gives you more positivity, energy, जब आप बार-बार ऐसी चीजें करेंगे. And people are there who want their services and who want to learn. So how to launch? The very first thing is 5 important things, 5 P's, 5 points you have to understand. क्या जरूरतें हैं? What all you need. First thing, a thorough course idea and a plan. Now this does not mean sorry, किसी डिस्टर्बेंस आ रही है. So that does not mean कि you should have a thorough, पूरी books हो, पूरे content हो, nothing like that. See, nothing you will do on the first day. First day you'll start with the first topic only, no? And before that also you have to plan for whom you are teaching. So what does it mean, a plan? See, first you should know your target audience. This is very important in online training, because when you'll post something, when you'll make some advertisement, whom are you targeting? ऐसी बहुत सी ads आपने देखी होंगी in which it is written learn Vedic mathematics. Now, does it give a clear picture? For whom? A parent, a teacher, a student, or which class? What is the target audience is very important. So whenever you are making an advertisement, whenever you are planning something, a course, a program, like in summer camp. Now in the summer vacations, if you post like this, learn Vedic mathematics, who will be coming to you? But if you post like this, make the best use of this summer to make your child understand mathematics, or age group dal do. So then more people will get attracted. Or if you write summer camp for children on mathematics, that will, so your ad, your plan, your concept should be very much clear. Who is your target audience? And this is where we generally fail. I'm not again repeating, not कि आपके पास पूरा उसका structure हो program का, nobody is going to ask you that. But when you're talking to someone, you should be very clear in that. I will be teaching these students, and this is my schedule, and this is my syllabus. If you have the syllabus also. Second, so
when deciding, you need to understand that you cannot give the same syllabuses to all. If you are having, you need to divide the students into groups. Class 3rd, 4th, 5th, they can have one group. 7th, 6th, 7th, 8th, they can form a second group, because you cannot merge also. This happens a lot of number of times. 8th class student is learning with 3rd class. Both have different IQ level. Even both, if you are teaching, like yesterday I taught you tables. Now table I teach to class 3rd also, but there is always difference in training, because when I am training them, it would be like I'll be making an image, some cartoonistic features and others, because they understand that thing. And for with you, it was different. So similarly, if you're putting class 8th and class 3rd together, their IQ will never match. And in that, a 3rd class student will not ask you anything, and slowly and steadily, he'll be not comfortable and he will leave the batch. So that is what 3rd, 4th, 5th, 1, 6, 7, 8, 2nd. So you need to plan separate syllabuses for them. And then if you are going for higher, 9th, 10th, or 11th, 12th, they are more interested in competitive parts. So like Prachi, आपने बोला कि first method से ज़्यादा second method easy है. But now if somebody is coming for entrance exam only, so they'll be interested more in first only. They'll not be able to understand balancing line. आपको balancing line आपने कल सीखी थी, इसलिए आपको आज वो clear था. But first case में, first example में, there was no concept of balancing line. Only one thing is to be remembered. Adding करने के लिए, you don't have to put anything beneath the unit place. And that is what we always do in multiplication also. So we have to correlate the points. Second thing, if slowly you think, no, I can teach the teachers also, then there has to be a separate schedule. So separate for 3rd, 4th, 5th, separate for 5th, 6th, 7th, then 8th, then 9th, 10th, competitive exams, and for teacher training, it should be a separate one, right? But this should depict in all your concepts, all your advertisement, all your telephonic calls, and whatever you are doing for advertisement or promotions. It should not be like, and yes, very important will be understanding in the coming slides, beautification, or what you call images, eye-catching images and videos, that is also required, but we'll study that later. So this was the first P. What is your requirement? See, every content you can get from me. Again, repeating, two things are required: content and delivery. So content is with you. You can. But for delivery, you need to work on it, and that will come only if you have some knowledge. So try to absorb more and more from your teacher. चाहे वो मुझसे पढ़े, चाहे किसी से पढ़े, you need to ask more and more questions. 2 घंटे आपको अपने लिए फ्री रखने ही पड़ेंगे if you want to further train it to students. Got it? Second is email list. Now, email list is if you have list of schools, if you have list of your people who are into some institutions, so you will be always benefited, because there are nowadays nobody goes for offline also. Everybody wants, yes, I should get a mail and I should respond it back. So email list always solves the purpose. But yes, if you are putting up in a society, a community, a surroundings where you have too many of houses and offline can work, so then you can collect that data and share with them. That will help you offline. But remember, offline needs investment. Online, you never need investment. Yes, you have one laptop, that's sufficient, and an internet connection. That is sufficient to teach. But offline, you need to make an office, you need to have attendant, you need to have so many other things. So it's always advisable nowadays when
everybody has accepted online education. 4 years back, it was a problem. At that time, parents were not accepting online, but now they have. After Corona, everybody wants, yes, online is better. They don't want to even send their kids sometimes. Right. Every day I'm taking 4 to 5 batches of students. So that is because parents are now looking further. Third, if it is online, where to launch, how to launch, what is that is called as a sales page. So sales page is a platform from where you can launch your classes. It may be paid or non-paid. We'll further learn in the coming slide. So these three things are important. Fourth, payments. See, nothing goes without payments. Keep in mind, I charged you, so you are sitting here. If I would have said this is free, you cannot pay interest. Same applies on you. Whenever you try to offer someone free of cost, they will never take you seriously. See, nothing is available free of cost. Nothing comes free of cost. And I always recommend, I always say, I always suggest, never offer your time, because if you don't value your time, your money, then why will another person value? वो भी समझेगा ये तो free है, इसीलिए free की calls, free दे रहा है सब कुछ. Why should you offer? So every service, maybe you are not charging very big amount, but always charge a decent amount so that people should value you. This is a human psychology. I often have this argument that yes, nature is free. What is free in nature? You inhale oxygen, correct, but that is also not free of cost. If you stop exhaling carbon dioxide, you cannot inhale oxygen for more than 1 minute. So how is it free? You are actually giving carbon dioxide in lieu of taking oxygen. So it is a barter system. And everything works like this only. So if you want to see the actual fact, today search Google. See, whosoever is offering free of cost, they won't be having even a single like on their pages or that issues. And if you go with them, it will take time. Right. So please, after this, whenever you launch your classes, charge decently. But now the point comes, how to charge, how to take. See, if you are taking in India, everybody has got wallets. Prachi for you. GPay, PhonePe, Paytm होना कोई गुनाह नहीं है आज की डेट में. Everybody can have it. So, parents, because everybody has started paying. एक रेडी वाले पे भी देखते हैं तो उस पे भी पेटीएम का आज की डेट में बैनर लगा है. Because this is being widely accepted. Only problem arises if somebody says, okay, I have to pay through credit card. Yes, that is, don't get afraid, no, I cannot take by credit card. How will I take? Yes, you have the option. There is a simple 2 websites where you can register and you can accept payments. But yes, they charge 3% of transaction. So if you are taking 2,000 rupees, so they will charge 3% of that, right? 60 rupees they'll be charging. Now that also depends on you. Either you would pay or your client would pay. So both the ways is possible. So you are not losing anything. You are getting business. So never say no. Razor Pay, InstaMojo, they are you call it as a transaction or payment gateways. Now we all are lucky now. I talk about 2014, 12. At that time, to get this payment gateway, it used to take 1 month approval.
First, you used to sign the documents with the bank. They used to send it directly to a payment gateway, and then you got approval after months. Now it is hardly 2 minutes game, and you get the approval within 48 hours. And nothing to be done. You don't have to pay anything for this. Link your card or any of your debit card, because that will only accept payments. Similarly, if you want from international, PayPal is one such website. With that, you can accept any international payments. Now, I have international students, so definitely they have to pay. Otherwise, what you'll do? You'll not charge from international payment, students. So payment is very important thing, correct? So for that, you should also have all wallets with you. Amazon Pay, all IT personals use this. Paytm, everybody has it. Google Pay, everybody has it now. Phone Pay, everybody has it. So 4 apps, nothing more. And you just have to download, that's all. So this is only one country in the world is there from where accepting payments is a bit difficulty, and that is Nepal. But fortunately, I worked on that also. There are several. They can also deposit in bank, SBI Bank and PNB banks. Collaborations are there, and the minimum amount they can deposit. Otherwise, our wallets and their it does not work. Neither with PayPal, because their government has this policy that they don't want their money to go outside the country. But if you come across such situation also, then also you can anytime contact me. I have the relations, I can do that also. So this is very much important payments. And the last but not the least, term and conditions. Again, this is what you cannot copy from others, because you should have your own identity, your own terms and conditions. I will teach 6 days only. I'll teach this, or my timing is this. I don't have any refund policy. Whatever you decide, that should be very much clear on your website, Facebook, or anything, so that nobody bothers you. See, a smooth running business is always when you have clear cut terms and conditions. And this, when you start, then such problems arise, because people think you are new, they try to overpower you. And it's a quite natural thing. But yes, it's very less in online. Offline it is more, because 4 दिन के बाद कहते हैं बच्चे को समझ नहीं आया, आप कुछ नहीं कर सकते. Yesterday only, one of my friends, she was in Pune, she asked me the same thing. What should I do now? I think, what should I suggest? Because that's not practically possible. They might have put some efforts on this. Right. So that you have to decide. So the key thing is content and delivery. Again, repeating, content is available to you. Delivery you need to work on. Now, how to create these eye-catching content? Because whatever you are putting on net, that is like an advertisement, because you are mentioning, yes, learn Vedic mathematics or something. If it is not eye-catching, will somebody get attracted? Until unless people stop on your post, because it's not 1, 200, no, millions of posts are being posted in 1 minute, millions. So how will people look to you only? How will they get in touch with you? That was the reason I told you profile and page is a different thing. Profile goes to only your friends, and that too, if friend is busy for that moment, it will go down. But page, even Facebook will promote you, support you, because that is a commercial identity. There is always a word called transparency in that. That shows how much old you are. Right. So that always works out. And if you get some reviews initially, then no looking back. Now today, check with my reviews. I've got 125-star rating. Similarly in Google. Now that
adds to it. Somebody visits Quora, he writes, oh, sir, I saw I want to join you. So this is how you need to work on it. Small things will make a big picture, right? So very first thing, how to create a picture, attractive picture. That's what I am coming. Now, you need to work on media, graphics, images, videos. How to get it? So for images, earlier there were two softwares called Corel, Photoshop. Now Corel and Photoshop are outdated today because that you cannot do it with your mobiles. You need everything handy. Canva is one such software. Check, download today, and you'll see so many templates, thousands of templates, which are suitable for your business. For example, mathematics. If you search with mathematics only, you'll get thousands. So what you have to do? Add your pick, add your data, and finish. That is designed. Similarly, initially, when you start coaching, when you start teaching, now you cannot remember so much of content. Then also there is a solution. This problem arises. People say, how will I able to speak so much? There is a software for this also. Agar yaad ho, earlier when there was a national DD TV, news, national news, there was always a TV in front of those. What was that? Actually, whatever they had to speak, it was scrolling in front of them. So that you call it as, nowadays we call it as teleprompter. So there is a software, you can write down teleprompter, you can download from Play Store, whatever you want to speak, put it in that software, set the speed. Speed means kitna jaldi wo upar ja raha hai. So you hold a mobile in your hand like this and make a recording. Nobody will be able to judge whether you have crammed everything or you are watching and speaking. That is known as reading the script and recording. And 19% of trainers initially, in their initial days, they do like this also. Yes, with time you learn a lot, because with time you know what to speak, how to speak. But initial days, everybody needs this. So very good software, teleprompter. Right. So here, Himani, I'll give you, I know graphics, but since I'm totally hooked up with Vedic mathematics, I was among the first few people who learned internet. So I know designing part, but I'll give you correct person for this. So you can be in touch with, or you can touch with Rati ma'am. She'll give you the best. Right. Okay. Now, please take a screenshot of this. This is from where you can get free ideas, music, fonts, pixels, color palettes, whatever is your requirement, you can get from here. Right. Now, like Canva, it has 1 month trial. So today, please check this, because that's what, see, make a habit, whatever you are learning. See, I'll give you a hint how I do. I've got four numbers: India, Nepal, US, sorry, 2 Indian. So what I do is generally I make a group of all four numbers, and I've named that learning. So wherever I get something which I need to remember later, I put in that. So that means that is available in all the 4 numbers also. And whenever you get free, you can learn that. Make that a habit, because otherwise, where will you store? You'll forget. So make such group. Only in that. If you have only now 1 number, then also it's fine. Add it. Got it? So this way you can do. Have you taken this unlimited free images, videos, and all? Pixel, Pixpay, Frito. From here you can get a lot of things. Coming to the major thing, how to launch, where to launch. The very first thing before launching your classes, you need to work on
two important things. Are you looking it for recorded or live sessions? First decision you have to take. Yes, Anjali, what do you think? It should be live or recorded? I think recorded first. I choose recorded first. Okay. So that means when you launch your classes, you will go for recorded sessions. Any specific reason for that? Sir, I think I have no confidence yet. जितना होना चाहिए उतना नहीं है. So how will you get clients then? After their reviews, Acha. after some classes, Definitely, that's so. Okay, I'll tell you. Yes, Dr. Kaur. Dr. Kaur is already. Yes, sir. What do you think? If you have to launch the classes, would you like to go for recorded or live sessions? We can have both of it. We can have recorded and live both. Recording is for records of the students where they can go through it in a later stage. And live is when you are having an actual interaction. So both are important. Hey, one thing is, see, when we are taking live, definitely you are sharing recording. That is not what I mean. That means sometimes people have posted it that it's only recorded sessions. So there is nothing like live in that. Live means, yes, you get a copy. That is always there. Now, yes, Himani, what do you think? I think all can be done recorded live one-to-one and group, and accordingly price can be kept. The recording can be recorded can be the cheaper one because it will not have a cross questioning type of things for students. So it is. You think it is beneficial for the trainer? There would be no cross questioning. But just tell me one thing: will any parent agree to that? The students who have learned means they have some introduction about this Vedic maths can go for recorded ones. I don't. Let's not talk about Vedic maths. Let it be general mathematics only. Yes, no, Prachi. sir. In mathematics classes, it can't be done recorded one. That's what I said. See, when we are talking about today here, we are talking particularly about mathematics only. Let's not deviate. It is Vedic. Let's say it's maths. Can maths be learned just by video? अगर ऐसा होता तो today we would have got so many Shakuntala Devis and Ramanujans. Because everything, every bit and byte of Vedic maths is available on YouTube, on Google, everywhere. But the point is, sometimes we cannot understand the meaning of words. And yes, if it would have been psychology, history, civics, any other, so then you can read and understand. But here, maths is a practical approach. Until unless you solve 10 questions, we will not be able to understand. For example, today I gave you. Till yesterday, till today, half part, I was saying one digit at one position. And immediately I said, no, we can have two also. No, I gave you the reason behind it to make you understand. But was it possible that only video would have served it? No. See, I'll tell you, yes, regarding cost, you can always go for it. Yes, cost is there. But what I would advise, that is for higher programs. But when you go for mathematics at a lower level, lower means the basic concepts. Now, these all things are basics. Arithmetic, algebra is basic. If you don't have the thorough knowledge of it, trigonometry cannot be done. Now, trigonometry, Vedic mathematics can be a video recording only because teachers won't come to you also. Because they are not no more teachers, they are what you call as trainers. I have so many of international trainers with me who have taken courses from me, but they come at the last night batches
and then they are using my books, and yes, we are giving them, so I should not say. Now, what is, because basics are first needed. See, math is one subject which cannot come by just watching like a video. You will not find any interest. So when particularly we are talking about Vedic math, this is my perception. Maybe you have a different one. And second thing, cost, I never care, because parents, they want the best for their kids. Yes, they discuss on cost, but if you give them a genuine reason, they never say no to that. But फिर भी, I would say there are people who don't have sufficient funds. So that could be one thing. But again, who don't have sufficient funds, they will not, never settle down with recorded video, because they'll say, then तो ये क्लास में पढ़ता तो है स्कूल में. समझ रहे मेरी बात? और वो recorded video YouTube पे free भी है. Yes, Then sir. how will you manage that thing? I'll give you one more hint. आपको ये जो लगता है ना, Udemy पे there are so many trainers in India who are writing so many reviews or thus. I receive on an average 2 trainers application every week, and they claim, yes, they are on Udemy. When I asked him, sir, you already have given lectures with your name, how can you come under my name? So you know what is the answer? Yes, we did that mistake, because now we have given recorded at 500, people are not ready to pay us. So वो एक image आपकी जब बन जाती है ना, I always prefer live, because if you touch that person, if you are able to give a smile on the face of a student who is suffering from this pain, yes, it is a big pain. I'll give you one example. One student was 3 months pregnant. One lady was 3 months pregnant when she joined me. And after third class, that review is also available. After third class, she said, she was taking a night 9 to 11 session. She said, I don't have any problem now. And how is it related? You can say, you can ask me this, how is it related with maths? No, it is related with motivation, self-confidence, and that positivity. So when you are positive, when you are motivated, when you are confident, you can go through any situation. So Vedic maths is what makes your life different. But for that, you have to get in touch. You have to personally, not personally, one-to-one is not possible, but yes, you have to be connected with them. Right? This is my perception. Again, you might have different. And one-on-one, yes, these days it is difficult because cost, people don't have sufficient funds. Before Corona, I always used to teach one-on-one only, like this South Africa person, like this Priya, and so many other from different countries. But now even they find it difficult. I just, if you see my Facebook, one lady from Australia, she's running abacus classes, apekshaabacusclasses.com. So she took training in group only, 9 to 11 morning batch, because funds are. And second thing, doing maths, you learn also, because when you are alone, you will find difficult to ask question, or maybe you skip something. But when you are in group, one is you are saving funds. Second thing, you are gaining more knowledge. But attention should be 100%. It's not it is group, so we'll keep the video off and we'll just listen to it. We'll understand everything. Not possible. Agar आज practice 5 वाला भी नहीं किया, तो I challenge you cannot remember that also, because आपके दिमाग में आएगा वो concept क्या था? Why was it happening? So if you practice, then you'll never forget. So maths is like that. Correct. Coming further, sales page. Yes. So now once you have decided that you are going for live, I'm leaving recorded right now. So again, you need to decide, are you going for open webinars, workshops, meetings, classes? That means
this is like sometimes we come on the screen and say something. So these are open webinars, workshops, meetings, classes. So for that, Facebook is the best place. Instagram is one of the best place, right? Where anytime, and you might have seen whenever you log in into your Instagram or Facebook, you get a notification XYZ is online. So see how much support you are getting from these Facebook and Instagram. They are intimating your friends that you are online. Now it depends. You are posting you're driving a car, or you're posting taking a lecture. So if you're taking a lecture, it would be go as a advantage for your business. But if you're putting it as I am driving a car, it will just give you one like or one love. So that is what you have to think about it. Correct. WhatsApp groups, that is also one way to launch. And yes, applications like Udemy. So this is mostly used when you record the sessions. Okay, I don't need funds. I'll record for once, put it, let people come, let people pay, and go away. If you just, I'll give you one more example. I had a student from London. She was having 117K likes. I asked, ma'am, how do you get so many likes? I don't get. Why? Yes, I have 13K, but still less. So she said this was 3 years back when it was Corona, before Corona. At that time, there were less viewers, less people who were on these platforms. After Corona, everybody is there. So the likes and everything has been divided. Yes, that is a fact. So earlier, people used, it was lack of awareness, or you can say lack of more people were not into this field, Vedic maths. So Udemy was serving a good, right? But after taking one lecture, I have a student who is taken from 4 different trainers, live lectures. After that also is coming to me. So it all depends whether you are getting your queries solved or not. Correct? YouTube, LinkedIn. So YouTube, you all know, you can have any videos posted on that. LinkedIn and live also. All these work on live also. LinkedIn is also possible, but I don't think that allows everyone. For that, you need to pay professional. You have to take the package, and then they allow. So generally, we don't go for it. For paid sessions, like today we are taking, or you can say restricted sessions. So then Zoom, Google Meet, these are the 2 important modes. Zoom we are doing today. Google Meet is also one such platform. Apart from this, now yesterday what I did, we took a live class on Zoom, and then we gave a video that was hosted on YouTube. Correct? Your purpose is solved. But if I want to make it more attractive, means it should look like Dr. Yogesh software and everything, then there is called LMS. LMS means Learning Management Systems. So I'll give you that link of my app. You can say it as an app now, Class Plus, and so many other are coming. Earlier it was only Thinkific, Teachable, Zenler. So you will log in into those, and indirectly it is through Zoom only connecting. You take a live class there, gets recorded, it is kept there itself. So you get a login for these softwares, but it has a limitation, because until I pay to Teachable, you will be able to view it. What after that? Finish. But YouTube, I think, will long for last. So these are called LMS, right? And they are some costly affair. I think earlier it was charging $112 per month, or 27 it was, and 112 or something like that per year. But what I did yesterday, it is a simple solution for all of you. Take Zoom class, record it, put it on YouTube, share it with others. If you want to make it private, then you need to take email IDs of those persons, add to it. Only those persons would be able to see who are using those email IDs.
and nobody would share their IDs to others. So your video will be safe. Or you can make one thing more is you can hide, so that whomsoever you're giving the link, that person would be able to see. So there are options, 3 options available, right? So this way you can do it. That was payment. We already discussed a lot on that. Paytm, national, internationally, it was PayPal, Instamozo, and Razorpay. These are for accepting credit cards or any kind of payment from India. No issues. Yes, any question regarding this first? Yes, Sonu. Any questions you have? No, sir. Yes, Prachi, Imani. No, sir. Okay. Yes, Dr. Kaur. Thank you. So now we'll be starting with cubes, right? So what is a cube? We'll start with cubes of 2-digit numbers. So what is cube of a number? Yes. What is a cube of a number? Sir, one question. Hanji? सर इन लाइव क्लासेस एट फर्स्ट मतलब स्टार्टिंग में हम लोग किस तरह के टॉपिक्स पे वीडियोस बना के डाल सकते हैं? नहीं, लाइव क्या रिकॉर्डेड में? लाइव में वीडियो कैसे डालेंगे? नहीं मतलब जैसे कोई भी अगर मुझे उन लोग बता रहा हो तो मैं लाइव क्लासेस में किस तरह के टॉपिक्स को स्टार्ट में ले सकती हूँ? डिपेंड करता है कौन से स्टूडेंट्स हैं। ओके, क्लास कौन सी है? हाँ, ओके सर। और दूसरा, डोंट बी रिजिड कि मैं ये ही करूंगी। देखो, मैंने कल भी बताया था, नो स्टूडेंट विल कम टू यू टू लर्न मैथ्स। 3rd, 4th, 5th का भी बच्चा जबरदस्ती माँ बाप भेजेंगे तो आएंगे, 6th, 7th, 8th का भी, और 9th, 10th का तो भूल जाइए, वो तो ईगो इतनी आ चुकी होती है, क्योंकि you cannot start directly with their content. Now 9th, 10th have a problem in algebra, they have a problem in trigonometry, they have a problem in cube roots. But how can we touch directly cube roots without basic knowledge of balancing line or basic knowledge of arithmetic concepts? So first class सबकी कहने को tables ही होगी, but the way to tackle would be different. जब हम बच्चों को करा रहे होंगे छोटे, so you have to make it more funny, more attractive like that, right? Or when you are talking to 9th and 10th, you have to be more knowledgeable. So that all depends. Yes sir. है ना? बाकी एक तो फ्री मेरे YouTube पे जाओगे ना, कुछ बच्चों की वर्कशॉप्स पड़ी हैं, उसमें देखो, एक में 85 बच्चे थे, मैंने कल भी बताया था। अब वो स्क्रॉलिंग कर रहे थे, यहाँ पे ऐसे से कट मार देते थे। आई डोंट स्टॉप एनीबॉडी। आपने देखा, मैंने वीडियोस, मैंने किसी का ऑडियो ऑफ नहीं किया। आई डोंट हैव हैबिट ऑफ दैट, ना मैं किसी का वो रोकता हूँ। तो बच्चे भी करते हैं, कोई बात नहीं, कितनी देर करेंगे, बट वंस ही विल बी सेटिस्फाइड, वंस यू टच दैट मोशन की जो उनकी जरूरत है, देन दे विल बी बैक इनटू योर क्लास। सो फर्स्ट 2 सेशंस तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि यू नीड टू टच देयर फियर। Once they are out of that fear, then they'll go ahead. If they are not out of their fear, they'll not come back. Yes sir. Right? तो काउंसलिंग सेशन ले सकते हैं आप, उसमें कोई इशू नहीं है।
Because there you'll understand what they need, what is their requirement, then you can have it. और क्लासेस में देखो कंटेंट देना पड़ता है. अगर हम कहेंगे ना कि I'll charge this much or that much, I'll not give anything, notes नहीं देने, assignments नहीं है मेरे पास, आप नेट से ले लीजिए, फिर मुश्किल आ जाती है. Because parents need everything, they don't have anything with them. मैं again repeat कर रहा हूँ, parents don't have any problem in funds. Only they're looking for the best for their kids. That's the only equation. You need to prove that you are best. If you are able to answer them clearly, every point, so they'll discuss. इधर उधर की भी बातें करेंगे. अब आए आप पे वैदिक मैथ्स करने, पहला क्वेश्चन ही पूछ लेते हैं, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम अबैकस. आप ये भी कह सकते हो कि why should I answer this, but no, you have to answer. इसकी कंसंट्रेशन नहीं है. अरे भाई, you have not started taking classes from me and you are asking everything. ये भी आप कह सकते हैं, but no, you have to answer. See, this is what is counseling. This is what is you mean by a trainer, a motivator. See, it's the simplest way to become a motivator. If you are teaching Vedic maths, it is one simple way to become a motivator, because every practice is motivating them. You are basically become a motivator only, right? Okay. So yes, what is a cube? Yes, Prachi, Anjali, Himani. थक गए सर. We have to multiply same number 3 times. थक गए सर नहीं बोला. कोरोना के दौरान मेरी क्लासेस 3-3 घंटे की थी. क्लास 6 weeks में वैदिक मैथ्स खत्म हो जाता था. Entire Vedic maths. It was 3 days a week and 3 hours each. That was time. ना अभी तो 3 बैठते नहीं. So n cube, n into n into n. So that means if a number is 1 cube, so that is 1 into 1 into 1, that is 1. If it is 2 cube, this means 2 into 2 into 2, that is 8. 8. Correct? So again, I would say, write down this table. This would be very important. We'll be doing all cubes from using this table only. So cube of 1 is 1, cube of 2 is 8, 3 is 27. So 3 into 3 is 9, and further 27. So please write down. Done? Done. Yes, everyone? Yes, sir. Okay, Ji. So we'll play a game here. Now, we know up till 10 we are already done. Clear? So let's study about 11 to 99. All 2-digit numbers left. Now, to make it more interesting for students, let us divide these numbers into 4. First, numbers starting with 1. So what are the numbers starting with 1? 1, 10, 1, 11, 2, 1, 11, 12, 30. 11 से 13, 99 में तो यही आएंगे ना, up till 19. 14, 15. See, 1 to 10 तो already done. So 1 और 10 तो आएगा ही नहीं. हाँ. चलो. Second, numbers ending with 1.
So what are the numbers? 1 1 2 1 3 1. 21, 31, 41, 91. 91. Correct. Third, numbers having both digits same. So example 11, 22, 33, 44, up to 99. ठीक है. Fourth, जो इन तीनों कैटेगरीज में नहीं आया, all left over numbers. Very easy बन जाएगा. Correct? Written? हाँ. Any doubt up till here? No, sir. Okay. Now, first number starting with 1. So the first case I'll take 12. अच्छा, वैसे हम कैसे करते हैं 12 का? If do 12 multiply by 12, so this becomes 4, 2, 0, 2, 1, 144. Correct? Again, we multiply with 12. So see, 4 times multiplication you do. 8, 8, 2, 0, 4, 4, 1. So 8, 2, 7, 1. Now, you'll see, we'll make it very fast. ये छोटा नंबर था तो it worked out. Otherwise, there would have been so many carryovers. यहाँ भी आने थे, इधर भी आने थे. I'll do this in 4 steps. First example में 4 steps लूंगा, उसके बाद से we'll one line. First step, create 4 spaces. मुश्किल तो नहीं है? Okay. Second, at first position, write 1, then write 2. Done. Third, अच्छा एक चीज बताइए, why I took 4 spaces, why not 3, why not 5? पूछा भी नहीं किसी ने. Why? Tell me. समझ नहीं आ रहा सर क्या बता. सर रिपीट करना, समझ ही नहीं आ रहा क्या बता रहा है. क्या चीज? अभी जो बताया है कुछ समझ ही नहीं आ रहा. 1 2 1 2 राइट किया है. तो 1, ये वाला 1 लिखा है, ये वाला 2 लिखा है, उसमें क्या समझना है? मैंने क्वेश्चन ये पूछा, मैंने 4 स्पेसेस क्यों ली? सर 2 डिजिट है और इसका क्यूब 4 डिजिट में होगा इसलिए. 2 डिजिट 99 का क्यूब 6 डिजिट में आता है. हाँ जी सर. तो फिर कोई बात नहीं, बाद में करेंगे. अब what is the square of 2? 4 What is cube of 2? 8. ठीक है. अब 4th स्टेप पर, so I got number 1 2 4 8. ये इतने स्टेप्स लिखने की तो जरूरत ही बाद में, फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए था. जो मिडिल टर्म्स हैं उनको डबल कर दो. नॉट स्केयरिंग, डबल. सो डबल मीन्स 4, डबल मीन्स 8.
फिनिश। नहीं समझ आया? एक और ले लेते हैं, कोई इशू नहीं। 14 स्क्वायर। फर्स्ट पहला नंबर 1, दूसरे 4। व्हाट इज स्क्वायर ऑफ 4? 16 व्हाट इज 4? 64 ठीक है, हो गया यहाँ तक। इसका डबल 8, इसका डबल 32। ऐड कर दो 1 12 48 64। कोई डाउट? नो सर। अब वही बैलेंस करो 4। सर रिपीट कीजिए प्लीज। 4 क्या रिपीट मैम? जैसे 1 एज इट इज लिखा, 4 एज इट इज लिखा और फिर 4 का स्क्वायर किया 16, जी और फिर नीचे 4 को डबल कर दिया और 16 को डबल कर दिया। अरे पहले ये क्यूब भी ले लो ना। अच्छा, ये दिखा नहीं मुझे। क्यों? 4 का हमने स्क्वायर लिख लिया और बाद में क्यूब लिख लिया 4 का ही। जी ठीक है। और फिर मिडल टर्म्स को, सिर्फ मिडल टर्म्स, प्लीज अंडरस्टैंड, मिडल टर्म्स को डबल कर दो और ऐड कर दो। अब आ गया? यस ये आपको सुनो, 264 एक अगर क्लियर हो गया तो 13 का करके दिखाओ। व्हाट इज द आंसर? 9 1 1 1 3 9 27, so 6 18, so that becomes 1 9 27 27, so 7 9 1। 2197 yes अंजलि, प्राची, यस डॉक्टर गोयल, गोयल कहाँ से निकल? 2251 5 कहाँ से आ गया? 1 कैसे आ गया? 3 का क्यूब क्या होता है? अच्छा, एक मिनट, सॉरी। अच्छा 9 का ले लिया, गलत। उसी टर्म का लेना ना जो हमारे पास टर्म है। हो गया? यस सर। 2197। हाँ जी। यस सर। अब ये देखिए 15 में 1 5 25 और 125, तो 10 50, तो 1 15 75 125। देखो सारा काम बैलेंसिंग लाइन से हो रहा है, आप समझ के चलिए। 5 87, तो 7 8 उधर गया, 23 3 2 उधर गया, तो 3 फिनिश। डन? यस सर। चलिए अगर हो गया तो सर लास्ट का 5 एज इट इज और 7 लास्ट की एडिशन कैसे किया आपने? 75 में 12 जोड़ेंगे तो क्या आएगा मैम? 87, 87, तो 7 आ गया, 8 आगे गया, 15 + 8 कितना होता है? 23, तो 3 आ गया,
2 आगे गया, ठीक है। तो लास्ट का डिजिट भाई हमें एज इट इज लिखना है। कल से यही करते हैं मैम, एक डिजिट ही तो रखना है हर जगह। अगर ये हो गया तो एक 19 का करके देखिए, करिए। एक मिनट में आता हूँ। 19 13,277 यस मैम। 15859 यस बाकी अंजलि, व्हाट इज द आंसर? Sir, I got 15859 158 59 यस अंजलि। गलत। प्राची 13,277 करेक्ट। डॉक्टर कौर, हिमानी सर 6859। देखो अब 1981 और क्या होता है आगे? 729 729। तो ये हो गया 18, ये हो गया 162, तो 127 243 then 729, तो 9 एज इट इज। अगर 72 यहाँ जोगे तो 5 बन गया, 31। 20 ये 31 है तो 8 आ गया, 3 into 5 है तो यहाँ 66859। इतना बड़ा आंसर्स आपके कैसे आ रहे थे? हाँ यस सर, वो सर लास्ट डिजिट में गड़बड़ हो गया। ध्यान देना है। हाँ सर। चलो क्लियर। अब यस सर। गेम है बिल्कुल, अगर समझ पाओ। अब सेकंड टाइप। यस डॉक्टर कौर, आपका आंसर नहीं आया अभी? हाँ आ गया सर, मिस्टेक किया था, 143 किया था 43 किया। ठीक है, अच्छी बात। नाउ रिवर्स ऑफ दिस 21 नंबर्स एंडिंग विद 1। क्या करना है? कुछ भी नहीं, पहले इधर से चले थे, अब इधर से चल लो उल्टा। 1 उधर बाहर, 2 इधर, उसी का स्क्वायर 4, उसी का क्यूब 8, फिर मिडल टर्म्स को डबल कर दो तो लो आंसर आ गया 9261। फिनिश। कितना इजी है, आया समझ? यस सर। यस प्राची, ये समझ आया? इसमें तो कोई कैलकुलेशन नहीं थी, और इसको वैसे करते रहो। I remember my student was there in 8th standard. She said, "Sir, paper स्कूल में ये कराया गया, and the teacher was writing on the table पूरा आंसर, मैं करके आंसर भी बोल चुकी थी कि this is how fast 1248 finish." Okay, 31 क्यूब क्या आएगा? चेक करो। 31 What is 31 cube?
29 ज्यादा ही थोड़ा होगा 2979 791 तो डर क्यों रही हो? बिल्कुल ठीक है, कॉन्फिडेंस से बोलो। सर मुझे लगा 297 गलत हो तो हो जाएगा, कोई बात नहीं, फिर क्या हो गया, गलत होगा तो तभी तो सीखोगे। डरना थोड़ा है, हमने डरना नहीं है। 1 3 3 का स्क्वायर 9, 9 का स्क्वायर सॉरी 3 का क्यूब 27, सो 6 18, तो 9 1 देखो सामने ही आ गया, 7 है, 2 इधर गया तो 2 9। कितनी छोटी कैलकुलेशन है इसमें, और वरना करते रहो बैठ के। हो गया, चलो। यस सर। 61 क्यूब 226981। वेरी गुड। सर 36981 आएगा। अरे भाई, ये आप देखो कहाँ गलती कर रहे हो। बोलो 1, उसके बाद 6, 6 का स्क्वायर क्या होता है प्राची? 36 6 का क्यूब क्या होता है? 216 हाँ? 216 216 ठीक है, तो ये आ गया 72, ये आ गया 12, 12 तो क्या आ गया 1 18 18 8 1 18 0 1 6, 216 तो 1 8 9 10 यहाँ तक तो 216 कितना आएगा? 226 आएगा। यस यस ठीक है, यस सर। चलो। तो दो अगले करने से पहले लेट्स फाइंड कि क्या आप पूरा टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम कैसे है। टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है वैदिक मैथ्स का, दैट इज 72 प्लस आवर्स। तो अगर आप करते हैं मंडे वेडनेसडे फ्राइडे, मींस दिस इज वीक डेज, हफ्ते के दिन अगर करते हैं तो ये 3 मंथ्स लगेंगे। और if you go for only Saturday Sunday कि I don't have time, I go for Saturday Sundays only, so it will take 4 months। अभी बैचेस कैसे होते हैं? मॉर्निंग 9 to 11, एक बैच अभी शुरू हुआ है लास्ट वीक, अगर कोई जाएगा उसमें भी जा सकते हो। Then 6 to 8 in the evening, then 9 to 11 PM, करेक्ट। तो मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक के बैचेस होते हैं, सेम दोनों जगह, यहाँ भी और वहां भी। Got it? What all you will learn? So I'll share you all the syllabus। आप बाद में देखना चाहोगे वो भी आपको मैं साइट बता रहा हूँ अभी, dryogesh.chandna.in ये वेबसाइट है। इसमें बुक्स है, /books, आपको लिंक दिया हुआ है पहले, राइट देयर you'll see 6 books with syllabus। I'll share you just now also। So ये देखिए, अगर आपने ऐड देखी हो, पहले था it was within 6 weeks complete होता था। तो I told you how it was, 3 hours रोज होती थी क्लास, but now it is 2 hours maximum। So first step is related to introduction to Vedic mathematics, the terminology used, जैसे कल टर्म यूज की एकादि के ना, ऐसे ही निखिलम एकायुने सब विल डिस्कस। सबसे इंपॉर्टेंट डिजिटल रूट। नाउ जस्ट नाउ आप लोग गलत कर रहे थे क्वेश्चन, तो देयर यू डोंट हैव एनीथिंग टू अंडरस्टैंड कि वो ठीक कैसे किया जाए। मींस
अपनी गलती देखिए हमें कभी किसी को भी दिखती नहीं है. If you understand this point, we are never able to see our mistakes. But Vedic maths में there is a concept called digital root या digit sum. अगर क्लास 1 क्लास 2 के बच्चों को पढ़ाना है तो सिर्फ एक यही कंसेप्ट बहुत है. They'll be able to verify their answers. It is very simple, but you need to understand कि कैसे अप्लाई करना है. And this is a base of numerology. This is missing in mathematics, but within 2 seconds you can check whether you have done your question correct or not. You need not to ask me or anybody else. अभी जो छोटी छोटी गलतियां हो रही थी, अगर हमें डिजिट सम आता तो हम वो गलती नहीं करेंगे. सेम स्टूडेंट्स का सोचो. Why do we, याद करो, हम बच्चों को जब एग्जाम में जा रहा होता है, why we say that attempt those questions first which you know by heart and बाकी, just because they don't get demotivated. So अगर उनको हर क्वेश्चन चेक करना आ जाए, अभी हम क्या कहते हैं, चेक करो आंसर, वो दोबारा वही क्वेश्चन रिपीट कर देते हैं. So गलती कहां से मिली? There is a technique called digit root, digit sum. That is, it hardly takes 2 seconds, but you get whether you are correct or not. So that is very important feature of Vedic mathematics. Vinculum numbers, ये एक नए तरह के नंबर है जिसमें आपको 6, 7, 8, 9 की जरूरत ही नहीं है. आप सारी कैलकुलेशन पहले 5 नंबर्स से कर सकते हैं. Correct. So yesterday we did this tables of 999 and writing any other tables. So this was what we did. Then is addition, subtraction. जैसे मैं कल बता रहा था कि no borrow at all. So this is step 1, right? हर step जो भी books हैं हमारे, वो step wise हैं. Means I call it as step 1, step 2, step 3 and step 6 तक है. Second part is निखिलम सूत्रा, अ वेरी पावरफुल मल्टीप्लिकेशन. आज आप 999 into 999 को गलत कर रहे थे. इसके अकॉर्डिंगली 999 मींस -1 लेस देन 1000. सो -1 into -1 अगर मल्टीप्लाई कर लेते तो 01 आ जाता. सो 998001 इज द आंसर. सो दिस मल्टीप्लिकेशन इज मेंटल मल्टीप्लिकेशन. जितने आपने क्वेश्चंस देखे होंगे इन गूगल, फेसबुक की, can you solve 99999? So any big number can be done with this multiplication. Entire one book is focused on this because it needs practice. And very important, third book, it goes with Urdhva Tribhyang Sutra. Any multiplication you come across, it becomes simple in one line. Even if it is 3 by 3 digit, it is 6 by 6 digit. That can be done in one line. 6 बार मल्टीप्लिकेशन वैसे करके और एक टाइम एडिशन नहीं, सब कुछ एक लाइन में हो सकता है. और once you understand that, after that you can do algebraic multiplication in single line. So algebra भी चाहिए. मैंने आपको जैसे बताया 8th class, 9th class, they are more fussy about algebra because they don't know. Correct. और इसमें इस बुक में सारी मेंटल कंसेप्ट्स हैं रिगार्डिंग मल्टीप्लिकेशन. मल्टीप्लिकेशन विद 111 वो कल किया था हमने. मल्टीप्लिकेशन विद 11 yesterday we did. मल्टीप्लिकेशन विद मल्टीपल्स yesterday we did. ऐसे ही 101 के साथ 1001. तो कोई भी नंबर्स हैं, हर नंबर की अलग मल्टीप्लिकेशन होती है if you want. Otherwise there are 2 general techniques. But Vedic maths का benefit ही यही है, every question can be solved in number of ways. Right. So yesterday we did from here 8th, 9th, 10th topic. Correct. Next comes your scaring. इसमें आज हमने we did 7th, we did 6th, and we did I think universal 11th. So 6th, 7th, and 11th method we did today, and now we were doing 18th topping cubes. So 13 method सिर्फ scaring के हैं. And every method is unique. Every method is different. Correct. Cubes can be done by 4 methods. Now you'll say, why to do by 4? Because something
one person can understand and something other. Everybody has got different mentality. Everybody has got different IQ level, and everybody cannot relate to one particular issue. Like 5, अगर हम 5 वाला आज नहीं करते तो हम 15 का वैसे ही फाइंड कर रहे थे, and somebody was finding it difficult. 25 वैसे ही कर रहे थे. So that is the reason कि कुछ चीजें मेंटली अगर आपको आ जाएंगी तो वो ज्यादा बेटर ही रहेगा. Fifth step, it deals with it is the old version, otherwise it deals it again, it is totally division, but mental division. Abhi tak, if you ask you to divide by 5, 25 or 125, you make a tree so long, but here you multiply and find the answer within seconds. And then there are Vedic mathematics techniques. Then there is a division by 7. So division by 7 I have submitted in Nepal conference paper also. LCM, HCF, very important topic, because students जितने 6th class के होते हैं उनको ये चाहिए होता है, क्योंकि this is for all the entrance examination. सबसे ज्यादा topics ही HCF LCM पर आती हैं उसमें, right? And the last step, it deals with your divisibility, square roots, cube roots, your equation, simple linear equation, quadratic equations, and you'll see आप linear equation mentally solve कर सकते हैं, कभी सोचा भी नहीं था, right? Calendar, polynomial equation, lot of things can be done. And last but not the least, magic squares. 12 by 12 का magic square या 11 by 11 का magic square, 13 by 13 का magic square, that you can design on your own. किसके काम आएगा? Games. So many things can be done through magic squares, right? So this is complete syllabus. Now what additional you get it? So the fees was 18,000, but yes, for all those now it is only 14,999. You get एक सबसे बड़ी अभी, all of you were thinking who will design. हम सब कुछ कर सकते हैं, we cannot design. Himani was asking कि मुझे course दे दीजिए. So you need not to design anything, because if you are my student, one thing is you are getting international certification, but please remember certification के लिए टेस्ट देना पड़ता है, सिर्फ अटेंडेंस का के कारण सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, right? You get 6 books free worth rupees 1320. जितने designs हैं, whatever design you find on my page, there are more than 5,000 plus designs. If you see my page, every day a new design comes. So we post 3 posts a day, all such free. All support letters, if you want to go to any school, you want a letter from us, it is there. And 1 year annual support is there. Anytime workshop you did this time, you missed some topic, again you can join anytime throughout the year, any number of times. So you don't have to pay again and again. Anjali, आपको ये doubt हो रहा था? नहीं. Right? So it is 14,999. Coming back, so whatever questions you have, this we can take it later on. Let's first complete the syllabus. Let me. Yes, now, so first 2 points are clear. Numbers starting with 1 and numbers ending with 1. Yes. Yes, sir. Okay. Third, numbers having the same digits. 22. For example, 22. Any idea? कैसे होगा? Anyone has got a hint? Yes, Dr. Kaur or anyone? Yes, sir. Anyone has a hint? Oh, मिडल में रख चलो और अच्छी बात है, बोलो तो सही. यस प्राची, कुछ भी नहीं करना. किसी दोनों नंबर सेम है, 2 का होता है 8 क्यूब 8 होता है ना, वही 8 चारों जगह पे रख दो और 16 ऐड कर दिया. 8 24 24 8 बैलेंस. So 8 4 6 4 5 6. This is your answer. If it is 33 cube, so 27 27 27 27, so 54.
54, add it and find it. है difficult? No, sir. So easy. So that is the power of Vedic math. And अभी तक हमने इसको समझा ही नहीं था. Okay. So do 55 cube. Yes, Prachi, समझ आया? Now nobody can say this कि ये वाला नहीं समझ आया. सिंपल एक क्यूब निकालो किसी का भी. 125. 125. Yes, done. Yes, sir. क्या है आंसर? 166375. Yes. Prachi. 166,375. Very good. So coming to the last. अच्छा 99 भी निकाल लेंगे. ये भी निकाल लो, एक खत्म ही कर देते हैं. बाप रे 3 घंटे हो गए. गड़बड़. So did you get bored? 3 hours maths class. Yes, Anjali. No, sir. वीडियो आधा घंटा नहीं देख सकते हम. Yes, sir. Yes, डॉक्टर कार. पर आज वीडियो मैम का बंद है तो इसलिए शायद अपना काम भी कर रहे हो साथ साथ. Sir, 970599. नहीं है. क्या 970299. Okay. Now the last. 970299. चलो करो अभी तो. The last one. If it is not, for example, 23, it does not lie in any of the case. 23 क्यों? करेक्ट. अब यहाँ आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा जो हम फॉर्मूला वैदिक मैथ्स में डिराइव करते हैं, बट अभी I'll give you directly. A cube बैलेंसिंग लाइन A स्क्वायर B, कम करते जाइए A B स्क्वायर B बढ़ाते जाइए और B क्यूब. अब अगर इसको ऑब्जर्व करो ध्यान से तो फोर्थ स्टेप में हम क्या करते थे? डबलिंग. तो डबल ये हो जाएगा, डबल ये हो गया. अगर इसको ऑब्जर्व करो अगेन तो दिस इज 3A स्क्वायर B 3AB स्क्वायर and B cube. It is same like A plus B whole cube is equal to A cube plus B cube plus 3AB 3A square B plus 3AB square. हम यही यूज करते रहे हैं कन्वेंशनल में, इफ याद हो तो. या इसको कई बार ऐसे लिख लेते थे, इन दोनों को इकट्ठा कर देते थे 3AB A plus B. Right. So the
कहने का मतलब है हर चीज वैदिक मैथ्स में है. ऑब्जर्व, जितना भी हमने वहां किए हैं वो सब इसमें है. बट द थिंग इज हियर इट बिकम्स मच इजियर. लो वापस आते हैं. नाउ लेट्स वर्क ऑन दिस. अब 2 3 है तो a is equal to 2, b is equal to 3. Correct. So what is a cube? 8. 8. What is a square b? 12. What is this? 18 18. and 27. ठीक है, यहां तक कोई डाउट? No, sir. Okay. Then 24, 36, 27, 54, 36, 8. So 7, 6, 5 goes here, 1, 4 goes there. देखो कितना इजी हो गया. अदरवाइज करते रहिए 12 से 12 मिला के. इज इट क्लियर? यस सर. चलो एक और एग्जांपल लेते हैं. चलो एग्जांपल से पहले अब ये देखो हमने जो अभी तक किया. आप बोलोगे जब फॉर्मूला लगाना था तो फिर पहले 3 गेम्स क्यों खेली? सी बच्चों को कुछ तो इंटरेस्टिंग भी देना ना. अब ये देखिए पिछले तीनों एग्जांपल्स. फर्स्ट एग्जांपल वाज 12. करेक्ट. तो a क्यूब क्या हुआ? 1. 2 क्यूब कितना हुआ? सॉरी a स्क्वायर क्यूब कितना हुआ? 2. 8. और हमने क्या कहा? 8. What we said? First write 1, then write 2, then write square of 2, write cube of 2. So that was just like playing a game. But even if you apply the formula, it comes the same. In case of 21, 2 cube 2 हो गया a, तो 8. a square 4, 2 1. But हम उल्टा गए थे. I started from here. 1 2 square of 2 cube of 2. Ultimately आया तो वही. Similarly 22 एग्जाम्पल. अब a भी 2 है, b भी 2 है, तो a क्यूब भी 8 हो गया. a square b, when a and b are equal, it is also 8. a and b are equal, it is also 8. b is 8. So then the question arises, why these 3 tricks? See, you have to make class interesting. फॉर्मूला ही रटना था तो वो तो फिर फॉर्मूले की भी प्रैक्टिस नहीं होगी ना. बट अब इतना करने के बाद they'll understand it. और ऐसे ही ट्रिपल डिजिट्स में भी जा सकते हैं बाद में. Got it? Any question now? Yes, Anjali. प्राची, जिसने होमवर्क कल नहीं किया वो आज कर लें प्लीज, क्योंकि होमवर्क करोगे तो अगला समझ आएगा. Yes. Sonu, any question you have? No sir. Anjali, Dr. Kaur, any questions? Richa, Heidi, Prachi. प्राची कोई क्वेश्चन है? अब नो सर. सब आ गया समझ? सबसे ज्यादा क्वेश्चंस तो आप ही के थे पहले. ये सर इसमें लास्ट केस में मैं एडिशन
एडिशन की इसमें थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए मुझे। चलो समझ आ गया कि कहाँ चाहिए, तो फिर तो हो जाएगा, फिर कोई मुश्किल आएगा भी नहीं, कि समझ देर है। और ठीक है, इन केस कोई मिस्टेक आती है तो सर मैं आपको पूछूंगी। कोई बात नहीं, कोई ऐसा इशू नहीं। आप बुक्स भी ले सकते हो, उसमें आपको सारा आ जाएगा। Yes, anyone? Yes, Dr. Kaur, any questions you have? So I'll share you the video very shortly and homework again. आज भी होमवर्क होगा, तो ये मत सोचना कि आज खत्म हो गया तो होमवर्क की जरूरत नहीं है। होमवर्क करो, then only you'll be gaining knowledge. Right? So thank Yes. you very much. So good evening. सर एक क्वेश्चन था कि बोलो। जैसे अब ये तो थोड़ा शॉर्ट से और इसको प्रैक्टिस की नीड लगेगी। मैं बेसिक साइंस टीचर हूँ, मैथ्स नहीं हूँ। मैं बस छोटे बच्चों को पढ़ाती हूँ मैथ्स, 4th 5th तक का। मैथ्स मेरा पहले से ही बहुत वो है, मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है मैथ्स में। बहुत कोशिश करती हूँ लाने की, बट एक लिमिट के ऊपर ऐसा हो जाता है कि नहीं अब नहीं मुझे पढ़ना है। और मैंने इस चैलेंज को लेके ही ये सब कि नहीं मुझे वैदिक मैथ्स की क्लास करना है और मुझे खुद भी ट्रेन होके पढ़ाना है बच्चों। तो मैं बाकी सर मैं बाकी सारे सब्जेक्ट चाहे जितने हार्ड हो मैं पढ़ के इंटरेस्ट से कर लूंगी, बट मैथ्स में ही मैं नहीं वो कर पाती हूँ। डर के आगे ही तो ठीक है। नया तो इनकेस जैसे हम अपॉर्चुनिटी तो मैथ्स में ही मिल रहा है, अब और कहीं तो नया अपॉर्चुनिटी है नहीं अभी। नहीं पहले नहीं जॉब वो नहीं नहीं है सर, मैंने खुद को एज इट इज चैलेंज लिया है, वही मैं बहुत आपको शेयर अच्छी करूँ। बात है, बहुत अच्छी बात है। देखो प्रॉब्लम कहाँ आती है, आपको डर पता है क्यों है? वो डर इंड्यूस तभी से हुआ है, बचपन से, आज नहीं हाँ है। यस सर, ठीक यस है सर, ना? क्योंकि मेरे बेसिक कंसेप्ट ही मैथ्स के क्लियर नहीं है। तो फिर मैंने अपने अच्छा, आपने कल क्वेश्चन पूछा था 11 क्यों कराया? इसीलिए कराया था कि मैं कहीं कंसेप्ट पे चलता तो क्योंकि जो वर्कशॉप होती है उसमें हर तरह के लोग होते हैं, कोई किसी प्रोफेशन से है, कोई किसी प्रोफेशन से है। और 2 डॉक्टर्स थे, डॉक्टर और भी एक डॉक्टर है, वो मुझे गाजियाबाद मिले थे, मेरी एग्जीबिशन थी। हिमानी इज ऑल्सो अ डॉक्टर। तो इसलिए ऐसे टॉपिक चूज किए जाते हैं जो इमीडिएटली समझ आ सके, पर इम्पैक्ट भी समझ आए। करेक्ट। जब आप बैच करोगे तब आपको एबीसी से करना पड़ेगा, मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन भी करनी पड़ेगी। जब एडिशन क्लियर हो जाएगी, सब्ट्रैक्शन क्लियर होगी, मल्टीप्लिकेशन क्लियर होगी, तब आगे बढ़ना आसान है। अभी हमने जंप किया, हमने कुछ ऐसे कंसेप्ट उठाए जिससे आपको फास्ट बना दें, पर अब 2 दिन में इससे ज्यादा तो नहीं दे सकते थे ना। मैंने 4 घंटे बोला था, 6 घंटे दे दिए, बट इससे भी ज्यादा अगर होमवर्क करते तो शायद आज थोड़ा बेटर होते आप। तो ये कमी भी है। अगर चैलेंज लिया था तो उसको पूरी तरह निभाते। वो मत करो ना कि मेरा मंगलवार शुरू होने वाला तो 11:15 सब खाना पीना शुरू कर लो, या रात को 12 बजते ही खाना। नहीं नहीं सर, कुछ कुछ दूसरी इश्यू आ गई थी तो मैं घर पे नहीं थी आज, नहीं तो मैं कर भी लेती थी। बट ये सर इन केस हम क्लास करते तो ये हमारा सारा प्रैक्टिस उसी में काफी हद तक हो जाएगा ना। मतलब होमवर्क तो हम करेंगे ही, बट और भी जैसा थोड़ा स्लो से चलेगा तो, क्योंकि कैसा है ना, ये मुझे ऐसे लग रहा है कि वो जैसा ही नहीं, टेबल्स के जैसे ही आगे आगे चलो तो फिर और पीछे है मुड़ो तो फिर से शुरू, थोड़ा इस तरीके से। आप अगर मैं 1 मिनट बुरा मत मानना, जब आप फोन पे बात कर रहे थे आपको चाहिए था कि मैं 25 टॉपिक एक ही दिन में करा दूं। आज आप ये बात रियलाइज कर रहे हैं। अगर हम पहले लिस्ट बना दें 12 टॉपिक्स की, वो होंगे कैसे बिना प्रैक्टिस के? दैट इज द डिफरेंस। सी, आपने इतने क्वेश्चन सॉल्व किए आज। अगर मैं सिर्फ आपको एक चीज सिखाता जाता, आगे बढ़ता रहता, तो मैं आदि वैदिक मैथ्स आज ही खत्म कर सकता हूँ। But this is not my approach. My approach is I want to make a trainer out of it, and same procedure will follow in the classes. अगर क्लासेस में इससे डिफरेंट नहीं है, क्लासेस में भी हम 10 सवाल नहीं करेंगे तब तक एक्सरसाइज देंगे ही नहीं। 10-20 सवाल तो चाहिए। गॉट इट? और फिर अगले दिन भी तो आप डाउट ले रहे हो। गॉट इट? चलो कोई नहीं, ये डिस्कस कर लेना आप उसमें
कोई जल्दी नहीं है, आप आराम से आज पहले होमवर्क करो, शाम को डिस्कस कर लेंगे, कल कर लेंगे। इट्स ओपन, राइट? एनीथिंग एल्स? सर एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगी। बोलो जी। जैसे ये वैदिक मैथ्स तो पहले हमारे एजुकेशन में था जब गुरुकुल प्रणाली थी तब, फिर ये धीरे धीरे हमारे एजुकेशन सिस्टम से कैसे मतलब गायब हो गया? कभी भी इम्प्लीमेंट हुआ कहाँ है? कब इम्प्लीमेंट हुआ? नहीं, मैं इम्प्लीमेंट की बात नहीं कर रही, मैं ये बोल रही हूँ कि जब बहुत पुराने जमाने में जब हमारे यहाँ गुरुकुल प्रणाली थी, जब मतलब जब अंग्रेज आ गए थे हाँ, तो सारे एजुकेशन सिस्टम भी तो बिगड़ा पड़ा है, आपको तो पता है। सर एक और क्वेश्चन है कि उस वक्त जब मतलब जब ये हटा तो उस वक्त जो भी एडुकेटेड पर्संस लोग थे उन लोगों ने इसके अगेंस्ट में क्यों नहीं कहा कि नहीं ये नहीं होना चाहिए, ये हमारे लिए ज्यादा इजी है, ये होना चाहिए? ब्रिटिशर्स के आगे कोई बोला था? अब बात कर रहे हो आप आज की बात बता दो मुझे। अभी बट उस आपको समय जो जो वैसी यूनिवर्सिटी थी जहां पर गुरुकुल प्रणाली थी, नालंदा है या जो भी है, इंडिया की पहली यूनिवर्सिटी कौन सी थी? बोलो नाम। शायद में भी नालंदा यूनिवर्सिटी। आज है? तक्षशिला थी, आज है? नहीं। फिर नालंदा का क्या हाल है? यस। ये मैम कोई तो वही चीज तो मुझे जानना है कि जब ये चीज इतना पावरफुल था। ये तो पॉलिटिकल है। आपको पता है ये एजुकेशन पॉलिसी अब आई है 2020 में, इससे पहले आई थी 1989 में, 86 में, सॉरी 86 में, 1986। ठीक है, तो तब फोकस वाज कंप्यूटर्स लाना है, नो रीजनल या अपना तो कुछ करना ही नहीं था तब। दैट वाज द ओनली पॉइंट, कंप्यूटर्स कंप्यूटर्स कंप्यूटर्स। आप उन दिनों के अखबार उठा के देख लो, गूगल पे मिल जाएगा सब कुछ उस दिन का। सी इट इज ऑलवेज द गवर्नमेंट डिफाइंस। जब मुगल थे उन्होंने मुगल सब बना दिया, आज अलग है। ये पॉलिटिकल बातें हैं मैम, इसमें हम डिस्कस नहीं कर सकते। हाँ आई जी कैन सर। नॉट मेक अ स्टेटमेंट। मैं आपको स्टेटमेंट ही पढ़नी है 1971 के डायरेक्टर्स, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड था चाहे सब बोलते थे इट इज जस्ट अ बुलशिट, इट इज जस्ट अ बंच ऑफ ट्रिक्स। आज क्यों एक्सेप्ट कर रहे हो भाई? फर्क है। आज यूजीसी वैदिक स्कूल्स खोल रही है, आप देखो नोटिफिकेशन आ गई है आपकी। मेरठ यूनिवर्सिटी एमए एमएससी वैदिक मैथ्स ला रही है, मेरे को नेपाल बुला रहे हैं, यूके यूएस में कर रहे हैं। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द टाइम एंड द लीडर एंड द किंग। तब किंग थे, जिसका जमाना होता है वो सब कुछ बनाता है। हाँ जी सर। सर एक क्वेश्चन था, जैसे 6-7 तक तो बच्चा मतलब उसको ये रूट, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट इसका इतना नहीं पड़ता है, जैसे एलसीएम वगैरह बेसिक शुरू हो जाता है। बट जैसे 8 स्टैंडर्ड से लेके 10 तक का मेन उसका वो होता है, अगर वो बेस अच्छा मतलब क्या पावरफुल बनाने के लिए ये टेक्निक्स हम उन बच्चों को जैसे अप्लाई करवाए तो क्या उनका मैथ्स कंपैरेटिवली अदर बच्चे जो वैदिक मैथ्स जिन्होंने नहीं किया है, क्या उनका वो उतना स्ट्रांग वो अपना कर सकते हैं? मेरे मुंह से क्यों निकलवाते हो? आप अपना बता दो, आपको कुछ समझ आया जिसको इतना मैथ्स का डर था? नहीं जैसा नेगेटिव क्यों बोलूंगा? मैं तो करीबन हजारों बच्चे कर चुका हूँ। व्हाई शुड आई से नेगेटिव? यू आर नॉट गेटिंग वन पॉइंट। देयर इज नहीं अ सर, ये सवाल ऐसा है कि अब लोग भी हमें पूछेंगे कि हम क्या, जैसा हमें भी अपना वो करना है, ऑफलाइन है कोई आता है हमारे पास कि मैं हम जैसे हम उनको कन्वेंस करने के लिए जैसा ये कंपैरिजन, ये आपकी फर्क प्रॉब्लम हम क्या बता है? सकते नहीं मैम, प्रॉब्लम ये मत समझिए, पहले प्रॉब्लम को समझिए। कन्विंस करेंगे किसी को तो आप जिंदगी में कामयाब नहीं होंगे। पहले हमें खुद को अंदर तक लेना है, हमें नॉलेज लेना जरूरी है। कन्विंसिंग करने में बैठ जाएंगे, आज किसी के पास फुर्सत नहीं है, आप जिसको लेक्चर देंगे और समझाएंगे, नहीं चाहिए उसको। 2 अक्षर में समझ आ जाता है, रिक्वायरमेंट। और दूसरी बात, इतनी रिसर्च क्यों हो रही है इस सब्जेक्ट पर? मैं आपको एक कल बेसिक पॉइंट बताया था, विजुअलाइजेशन। आज भी वही चल रहा है, क्योंकि नंबर 1 आया तो हम ऐसे कर लेंगे, 2 आएगा तो ऐसे कर लें, फिनिश। इट इज विजुअलाइजेशन। ये जिंदगी बदलने का तरीका है। ये छोटी छोटी चीजें तब आपको पता चलेंगी जब प्रैक्टिस करोगे।
एक वीडियो देखा, इंस्पायर हो गए, वो नहीं चलता मैम। और यही कारण है मैं 3 स्टेप्स करता हूँ। आई डोंट वांट कि आप मिड ऑफ द क्लास मेरे कहें कि सर मुझे तो मजा नहीं आ रहा। दैट इज द रीजन आई टेक 3 स्टेप्स। फर्स्ट, काउंसलिंग, आस्क मी नाउ शो होते हैं मेरे हर ट्यूसडे, हर थर्सडे। सेकंड इज दिस वर्कशॉप, एंड थर्ड इज टीचर ट्रेनिंग। आई डोंट वांट एनीथिंग, मनी इज नॉट इम्पोर्टेंट। ये आपको भी रियलाइज हो जाएगा थोड़े दिनों बाद। इसलिए कन्विंस वर्ड मत यूज कहें, नॉलेज शेयर करेंगे तो दे विल कम टू यू। मेरा सिर्फ कन्वेंस वो नहीं था, मतलब ये जो बच्चे वैदिक मैथ्स की टेक्निक्स के थ्रू अगर उस मैथ्स को अप्लाई करते हैं तो एग्जाम में या तो वैसे भी वो बेटर स्मार्ट रहेंगे एज कंपेरेटिव कि जो बच्चे बिल्कुल ही ये नहीं जानते। एंट्रेंस टेस्ट में करते क्या? और फिर एक बात, मैंने कल भी एक बात पूछी थी, 11th और 12th आजकल कोई स्कूल में करता है? बताइए। सारे नॉन अटेंडी होते हैं, आप चेक कर लीजिए। एकेडमी चलती है सर। फिर वो क्यों जाते हैं वहां पढ़ने वैदिक मैथ्स? मैथ्स के तो वैदिक मैथ्स से ही होता है, वो तो और कोई तरीका है ही नहीं। तो एकेडमीज में ऑलरेडी चल रहा है, पर वो वैदिक मैथ्स इसलिए यूज नहीं करते थे वर्ड, क्योंकि जब वैदिक यूज कर देते हो तो रिलीजन प्रॉब्लम आ जाती है। अभी आप समझ नहीं पाएंगे, ये प्रॉब्लम है। मैं इसलिए वर्ड बोलना नहीं चाह रहा था। हाँ सर, इनडायरेक्टली अप्लाई हो रहा है, बस डायरेक्टली फोकस में नहीं है। ठीक है, आप सूरत से हो ना प्राची? सूरत से हो आप? नहीं सर, अकोला, महाराष्ट्र। मेरी एक सूरत में लेडी है, दाऊद। शी इज अगेन मॉमडन, बट इतना अच्छा कर रही है, इतने स्कूलों में ट्रेनिंग्स दे रही है आज। इट डिपेंड्स। कुछ लोग इसे ईगो इशू ले लेते हैं तो लेते नहीं। आई कैन नॉट हेल्प देम आउट, राइट? चलो, मेरा सेशन है फिर। थैंक यू वेरी मच, और मैं होमवर्क भेज दूंगा, राइट? Okay. ओके सर, जो भी Thank क्वेरी you. विल डिस्कस। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर।